Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ashwini Kumar Chaubeji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1 in today's revised list of business. Sri Arjun Ram Meghwal. चेयरमैन सर, राज्यसभा की आज संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर जो दस्तावेज मेरे नाम के आगे अंकित है, जो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री पंकज चौधरी जी, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने वाली कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री SP सिंह बघेल। पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। श्री निश्चित प्रमाणिक। सभापति महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 5 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए कागजात को मैं सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department related parliamentary standing committee on communications and information technology, Dr. Anil Agarwal. माननीय सभापति जी, मैं अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अस्थायी समिति के 37वें, 38वें, 39वें, 40वें, 41वें और 42वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। Statement by Minister Shri V. Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan ji, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi outlining the reasons of not framing subordinate legislation under Section 3 of the Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India Amendment Act 2011. Honorable members, I have received 2 notices under Rule 267 from Dr. K. Keshav Rao and Sri Sanjay Singh. They have sought permission for suspension of the listed business. I do not find the notices in conformity with the directions already imparted. ये पूरी तरह से गलत है। ये अडानी मोदी का महाघोटाला है सर, इसकी जांच JPC होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। I have given my ruling. Sir, Dr. K. Keshav Rao ji, Dr. K. Keshav Rao ji, you have, one second, you have articulated very effectively what you mean to convey, and very effectively and rationally. Having, one second, having taken note of that, I have given my ruling, please. Dr. Ashok Kumar, one second. Honorable members, take your seat. Take your seat. Would you take your seat now? No, would you take your seat? What do you mean by नहीं मान सकते? नहीं, what do you mean by being so judgmental? I am surprised.
नहीं, आई एम सरप्राइज। बोलिए मुकुल जी, आप बैठिए, लेट मिस्टर मुकुल से। हमने आपको नोटिस दिया, आपने उसे खारिज किया। आपने कहा कि मौका मिलेगा, मोशन ऑफ थैंक्स पर आप कह सकते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स पर एलओपी ने अपनी बात कही, उसको आपने एक्सपंज कर दिया। एलओपी ने कौन सी ऐसी बात कही जो असंसदीय है? बैठिए बैठिए, एक मिनट बोले प्रमोद जी, बैठिए बैठिए। अदर्स में टेक सीट प्लीज, टेक सीट। उड़ीसा असेंबली में, कर्नाटक असेंबली में मैंने 3-4 उदाहरण देखे। जो शब्द नेता विरोधी दल ने प्रयोग किए हैं वो पूरी तरह पार्लियामेंट्री है। यहीं बैठकर मनमोहन सिंह जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था और वो आपकी कार्रवाई में सम्मिलित है, आप देख लें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप ही के आदेश का पालन हो रहा है कि भाई 267 में नहीं, जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो बोल लेना, उसमें बोल रहे हैं। तो वो भी अगर नहीं सुना जाएगा तो सर ये संसद का निर्माण जो हुआ है, इसकी जो परंपराएं हैं, आप हमेशा कहते हैं परंपराओं की रक्षा होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उन परंपराओं की रक्षा करिए। वो जो भी शब्द निकाले गए हैं उन्हें कार्रवाई का अंग बना रहने दें, ये मेरा नम्र निवेदन। Honorable members, I examine the proceedings in the light of rules framed by the House, and Rule 261 casts an obligation on me to make such sweeping observations that everything has been removed is not appropriate. I expect the honorable members first to go through what has been expunged. One second. Sir, please. I would urge you again that we are in a house where some decorum has to be maintained. I have taken my call. Dr. Ashok Kumar Mittal. One second. Please take your seat, Honorable LOP. सर, जो चीज रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे, लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate what I have expunged should not be used. तो What I have expunged should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो अब किताब में है, आप देखिए। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, और कौन सी भाषाएं, तो इसीलिए, और संसदीय भाषा जानते हैं, इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरा डिफेंस में आता हर राइट्स को टोकना, ये ठीक नहीं है। कृपया आप और एक बार उसको देखिए। Ultimate defender of the LOP is the chairman. नहीं, वो नहीं हो रहा ना सर, वो नहीं हो रहा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Dr. Ashok Kumar Mittal. I have taken 0 hour. Not present. Shri Binoy Vishwam. Thank you, sir. With a saddened heart and with lot of protest, I stand here. My concern and our concern, I should call it,
is regarding the miseries of the Narendra workers. Mahatma Gandhi, National Rural Employment Guarantee Act workers. Sir, their numbers come to 15.28 crores in this country. And those people, they work for the country. And they are also creating wealth in this country. And their sorrows, livelihoods, should be taken care of by this government and this house, I believe. Sir, in Narendra, we can see that it covers around 2,70,000 and 342 panchayats in the country. Such a wide scheme it is. I am proud to say it is the child of the UPA one government in which the left also played a critical role in evolving the policies. That government made this Narendra project. Sir, I am very constrained to say that this government of today is trying to kill that project, to kill it. The budget presented here in the House, in the Parliament, by the Honorable Finance Minister has allocated only 60,000 crores rupees for that scheme. So that's a paltry amount. And that amount will not be enough to maintain this project for the poor people. So 10 days back, thousands of them came to the national capital under the banner of the AITUC for a struggle. So their demand was that, so simple it is, enhance the working days to 200 in a year. Out of 365 days, they demand only 200 days. Moreover, the minimum wage they demand is only rupees 700. So today they are getting only 217 rupees. The finance minister and the ministers here and the chair, please tell us, how can a family live by this bigger amount? 217 rupees per day. They are not living, surviving. So please think of them and request the House and the government to take the matter seriously and see that at least this remuneration should be improved to rupees 700 and the working days to be increased to 700 days and their minimum salary should be 700 rupees per day. Sir, I am very sure that the government of the poor, as they claim, cannot forget this claim. Shri Imran Pratapgadi. कितनी आशाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागे से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो, इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावर लूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में जीएसटी, धागों पर लगाई गई जीएसटी ने पूरी यॉर्न मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यॉर्न मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने
ये दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और ये उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता जताई है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावरलूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावरलूम मशीनें कबाड़ में बिक गई। सभापति महोदय, जिस बनारस में कभी करघे पर बैठ करके कबीर दास जी झीनी बीनी चदरिया बुना करते थे, उसी बनारस में आज बुनकर भाई ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करघों के धागे टूट रहे हैं, मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं, पावरलूम को सप्लाई होने वाली बिजली के बिलों का बोझ इतना भारी है कि बुनकरों के कंधे टूट रहे हैं। जीएसटी लगा करके सरकार ने उनकी कमर और तोड़ी है। सरकार ने जीएसटी की, आखिरी बात कह रहा हूं सभापति महोदय, सरकार ने जीएसटी की लिमिट 20 लाख रखी है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि जीएसटी की लिमिट कम से कम 50 लाख की जाए, इस उद्योग पर मरहम लगाया जाए, सस्ती बिजली दी जाए। अब्दुल्ला, टाइम ओवर। Sir, thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, my hometown Pudukkottai, the royal province which existed between the year 1680 to 1948, was the first princely state that signed the instrument of accession on 3rd March 1948 after independence. His Highness Raja Sir Rajgopala Dandaman Bahadur was the princely state 9th and last crowned ruler. He was the first king who signed the instrument of accession with the independent India wholeheartedly with his total treasury amount currently located at Pudukkottai district. Additionally, he selflessly donated his royal palace for the functioning of the district collectorate at the request of the then Chief Minister, Dr. Kalaignar. He also served as a president of Tamil Nadu Cricket Association, Kodaikanal Boat and Rowing Club also. As soon as India gained independence, he decided to adjoin his country with India without any duress. His Highness Raja Sir was honored with many royal medals by the government. He died on 16th January 1997 at the age of 74. Sir, then the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel got the confidence to unite India along with the princely state only because of him. His Highness Raja Sir was honored with the George V Silver Medal and George VI Coronation Medal in 1937 also, sir. During the last years of his life, he shunned away marriage to serve the people and lived like a saint-like life, sir. To commemorate his centenary recall and considering the legacy, magnanimity, and simplicity of our beloved Raja, His Highness Raja Sir Rajagopala Dandaman Bahadur, I request the Union government to release a commemorate postal stamp recognizing his service to the unity of our nation, sir. Thank you. श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। बेलगावी हवाई अड्डे का निर्माण 1942 में रॉयल एयरफोर्स द्वारा किया गया था। 2018 में उड़ान 3 के अंतर्गत बेलगावी को 13 शहरों से जोड़ने के लिए 5 एयरलाइंस को चिन्हित किया गया था, जो इस योजना के तहत एक हवाई अड्डे को आवंटित उच्चतम हवाई मार्ग है। दिसंबर 2022 तक बेलगावी से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, नागपुर, नासिक, उदयपुर, जोधपुर, तिरुपति, पुणे, कडप्पा, मैसूर और सूरत से जुड़ा हुआ था। बेलगावी में उड़ान योजना के लागू होने से पहले हवाई अड्डे से प्रति वर्ष 74,041 यात्री बार के साथ 1176 उड़ानों चलती थी। उड़ान योजना शुरू होने के बाद हवाई अड्डे ने 231 और 22 में 2,80,000 यात्रियों के साथ 6,470 उड़ानों का संचालन किया। बेलगावी हवाई अड्डे को अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट के श्रेणी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान अवार्ड चैंपियन ऑफ उड़ान से सम्मानित भी किया गया था। बेलगावी हवाई अड्डे को उड़ान योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली सहायता की अवधि 3 वर्ष की है, जो
2023 में समाप्त हो जाएंगे। सहायता न मिलने के कारण वर्तमान में कोई एयरलाइंस अपनी सेवाओं को बंद कर सकते हैं, जिसमें कुछ एयरलाइंस ने बंद भी कर दी है, जैसे अलायंस एयर की पुणे की फ्लाइट। इसके अतिरिक्त कुछ और वजह से स्पाइस जेट दिल्ली की मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु की फ्लाइट, ट्रू जेट की तिरुपति, कडप्पा, मैसूर, हैदराबाद की फ्लाइट, इंडिगो की चेन्नई की फ्लाइट, स्टार एयर की नासिक की फ्लाइट, दिल्ली तक चलने वाली फ्लाइट नॉन उड़ान रूट के अंतर्गत थी। दिल्ली वाली फ्लाइट का पैसेंजर लोड प्रतिदिन लगभग 280 यात्रियों आना और जाना मिलकर था। उसके बाद भी इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया और बंद किए सभी रूट के पैसेंजर लोड काफी बेहतर था। बेलगावी कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यह जिला कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तीनों राज्यों के सीमा पर स्थित है। बेलगावी प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखता है। प्रतिष्ठित प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया सभापति महोदय, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। ये एक ऐसा विषय है माननीय सभापति महोदय जिसमें पक्ष और विपक्ष में कोई विभेद नहीं हो सकता, मतभेद नहीं हो सकता। और ये मैं संपत्ति और आय के ह्यूज असमान वितरण के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, कई हमारे मित्रों ने भी चर्चा की और मुझे खुशी है इस बात की माननीय वित्त मंत्री साहिबा भी हमारे समक्ष। और दिक्कत की बात यह है सर कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, लेकिन असमानता के महासागर में समृद्धि के कुछ टापू हो और पूरा का पूरा देश असमानता के उस महासागर में गोते लगा रहा हो, ये उचित नहीं है सर। 5% अभी जो रिपोर्ट आई है, मैं जानता हूं आप कहेंगे आजकल ऑथेंटिकेट करने के लिए तो मैं लेके आया हूं, लेकिन मेरी वाली कॉपी वापस करवा दीजिएगा सर जी। 5% भारतीयों के पास 60% संपत्ति है, उनकी संपत्ति से कोई भेद नहीं है। दिक्कत यह है कि 50% के पास सिर्फ 3% है। जब कोरोना में लोगों की आय घट रही थी सर, हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। सर ये अनायास नहीं होता है, ये सायास होता है। जिस समाज में धन और संपत्ति का इस प्रकार का असमान वितरण हो, हमारे पुरखों को अंदाजा था सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 क्लॉज सी, और मैं बार बार जब वित्त मंत्री जी के बजट पर मैं बोलता हूं, आग्रह करता हूं कि इसके नजरिए से बजट बनाइए। कुछ भी होगा, अगर हम इसको ना भरपाई कर पाए तो दिक्कत होगी। हमारे देश में भी सर सन 85 तक एक इस तरह के टैक्स की व्यवस्था थी, वेल्थ और इनहेरिटेंस। कई विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में ये व्यवस्था है, क्या हम इसे वापस नहीं ला सकते सर? इस एक छोटे से प्रोग्रेसिव टैक्स के बाद हमारे पास एक इतनी बड़ी संपदा होगी, इतना बड़ा पूल होगा कि वित्त मंत्री साहिबा को डेफिसिट नहीं देखना पड़ेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं लोक कल्याण के लिए, आप कर पाएंगी। मैं समझता हूं कि सर धनिकों के आधार पर, सुपर धनिकों के आधार पर जिस भी समाज ने अपने निर्माण की नींव रखी है, उस समाज में क्रैक्स आए हैं सर, ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है असमानता का पूरा मसला। अगर मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कि पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर के एक इस तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था करें, ताकि आप हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सर अभी 28 सेकंड बाकी है, हम सार्थक पहलकदमियां कर सके। और हाँ, आखिर में फिर से दोहराऊंगा कि आर्टिकल 39 क्लॉज सी सब पढ़ें, उसके हिसाब से नीतियां गढ़ें तो देश बेहतर होगा। और अमृत काल में सचमुच अमृत सबके हिस्से में आएगा, ना सिर्फ कुछ के हिस्से में सिमट के रह जाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। If the professor can conclude in 2 minutes, there is no harm. Why take 3 minutes? Shri Brajlal. धन्यवाद सभापति महोदय। आप कुछ मेहरबान रहिए। मैं आपका धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान धारा 304A आईपीसी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।
जो एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, तो उसमें ये लिखा जाता है। महोदय, 2021 का जो आंकड़ा है उसमें पूरे देश में 4 लाख एक्सीडेंट हुए, 1,55,000 लोग एक्सीडेंट में मारे गए, और इसमें 68% जो संख्या है वो 18 से 45 वर्ष के लोगों की है, जो लाइफ का प्राइम एज होता है, देश के प्रोडक्टिविटी में काम आता है। महोदय, जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 3.7 लाख है। हत्या में इस देश में जो 2021 में हत्याएं हुई हैं, जिसमें लोग 30,000 लोग मारे गए, तो एक्सीडेंट में जो मारे गए हैं उनकी संख्या मर्डर से 5.17 गुना है। ये बड़ा अलार्मिंग है महोदय। एक्सीडेंट में जो मुकदमे कायम होते हैं उसमें सजा है 2 साल की, और वो थाने से अवेलेबल है। चाहे कोई एक्सीडेंट करके फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों को दबा दे, किसी को झोपड़ी में घुसा दे, तब भी सजा महोदय मात्र 2 साल की है। और जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 85.4% एक्सीडेंट और स्पीडिंग से होते हैं। महोदय, मेरा ये कहना है कि अंग्रेजों के जमाने का कानून था, गाड़ी उन्हीं के पास होती थी, वही चलाते हैं, और आज भी जो है बड़ा वर्ग है उसी के पास है, तो थाने से ही अवेलेबल हो जाए, एक दिन भी जेल नहीं जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि धारा 304A है, उसमें अमेंडमेंट करके एक धारा जोड़ा जाए 304AA। अगर एक्सीडेंट कोई शराब के नशे में करता है, ड्रग्स में करता है, जॉय राइडिंग में करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करता है, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उसमें सजा का प्राविधान भी ज्यादा होना चाहिए, और उसमें फाइन भी ज्यादा होना चाहिए, जो मृतक के परिवार को दिया जा सके। इसलिए मेरा अनुरोध है महोदय कि ये 304A में कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए, जुर्माना ज्यादा होना चाहिए, और वो जुर्माना जो मृतक का परिवार है उसको दिया जाना चाहिए। यही मेरा कहना है महोदय। जय हिंद। डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, as per the latest report of TRI, that is 31st July 2022, the overall tele density of Orissa is 75.23%, which is within the bottom 5 states of India. Even the Northeast has higher tele density at 77.98%, and Jammu and Kashmir at 88.18%. The national average is 85.11%. So you can imagine the kind of service, the denial of digital services to the people staying in this region. Now, within this, the rural tele-density is only 62.73%. Internet density is 34.51%. All these statistics give one particular picture clear that the rural people of Orissa have no benefit from the extension of digital revolution in the country. The KBK region, sir, this has 7 aspirational districts. Now, in this region, sir, 10,000 villages have no internet connectivity, no tele-density, sir. 6,278 villages are still without mobile access or connectivity, sir. Now, wherever there is a internet connectivity, the signal is so weak that they have to either climb up to a house, and if they don't have a house because it's Malkangiri and areas, they have to climb up a tree, sir. Now, in this kind of a scenario, sir, it was envisaged to install towers, mobile towers, and there was a proposal for it. The proposal is LWU Phase 2, Reliance Jio was supposed to install 483 towers. Aspirational Districts Projects, 2,379 towers. 4G Saturation Project, 1,572 towers, and similar such proposals. But there is no timeline given for completion of these projects. When will they be completed? Similarly, sir, the BharatNet project, sir. Now this, the government of Orissa had asked for approximately rupees 327 crore under the special assistance for increasing utilization of BharatNet Phase 2 in the state. These funds have also not been released. So what concerns me is that the budget, the center's current recent budget estimates is 26% less than the previous budget estimate of last year and 37% less than the revised estimates. In such a scenario, sir, I shudder
to think how this entire project will be completed and digital connectivity in the remotest part of Orissa, particularly rural left-wing extremist affected areas, will be completed. So through you, sir, I urge the government to have a concerted effort in completing this project and ensuring that tele-density and internet connectivity increases in rural part of Orissa. Thank you so much, sir. Dr. Fozia Khan. Thank you very much, Chairman, sir. Sir, as per the data revealed by SAFAR, India Institute of Tropical Meteorology, IITM, the air quality of cities like Mumbai and Pune have dropped to poor and very poor levels, sir. So this is the result of the northeasterly and the easterly wind flow, which carries pollutants and moisture with it. The pollutants which flow from the Indo-Gangetic Basin and central India, combined with constant drop in temperature and the cloudy weather throughout the day, have rendered these pollutants to stay within the vicinity of humans, blocking their escape to higher levels in the atmosphere, sir. So usually when temperatures are high, humidity is less and there is dry weather with greater particle suspension. These pollutants are responsible for the falling of the PM 2.5 concentration to 317 micrograms per cubic meter in Pune and 313 micrograms per cubic meter in Mumbai, when the maximum possible limit is 60 micrograms per cubic meter, sir. A more or less similar situation is there throughout the state concerning these affairs. Additionally, it has left the doctors worried about a hike in cases of upper respiratory tract infections, bronchial asthma, and heart issues, sir. These pollutants could either be from dust or pollen or from vehicular emissions. Sir, although at present, it's not in the hands of humans to alter the structure of winds and the climate, a robust mechanism to combat factors that lead to air pollution must be raised, sir, and the health infrastructure for this needs to be maintained to address such issues so that people affected, especially the senior citizens, sir, can avail themselves of the benefit of the same. At the end, I will only say, sir, be a part of the solution and not part of the pollution. Thank you, sir. Srimati J.B. Mathur Isham. Sir, I'm deeply obliged by the opportunity. I would like to draw your kind attention to the impending crisis faced by the paddy farmers in Kerala. So the paddy farmers in Kerala, the state corporation had procured 482 crores worth of paddy, but unfortunately only 45 crores have been paid to them. 437 crores is pending with them. And why this happened? Because about 580 crores is pending from the government, union government to the state, and 460 crore from the state government. So the farmers, if the paddy farmers are not provided with the money which they are rightfully due, it is pushing them towards the wall, and it is very, very unfortunate that the payment is not being paid. So all I'm asking for is that the union government should make the payment which is due of about 580 crores, sir. I'm not asking for 21,370 crores from State Bank of India, sir. I'm not asking for 70,000 from LIC, sir. All I'm asking is 580 crores, which is rightfully due to the paddy farmers of Kerala. So let me respectfully remind that our country's and this government's priority ought to be farmers and not a company. Let me also respectfully remind that our country's and this government's priority ought to be to ensure that every one out of 140 crores of people in this country, they should not stay without food, and not the priority should be to make 1% richest in the world, sir.
Let me also respectfully remind that our country's and this government's priority should be to ensure that not a single youth will stay without employment and but not to make all sectors being given to one person, sir. So I take this opportunity to once again respectfully submit to remind this government that our priority is farmers, and in Kerala, this paddy farmers is facing grave injustice, and if union government is given this 580 crores, it will be a great blessing. And I can assure you one more thing, sir, if this 580 crores is given, nobody will in this country will ask for JPC. There will not be walkout. Sir, there will not be any kind of issue, but there will be definitely a great blessing by the farmers. Thank you very much for the opportunity. Shri Kartike Sharma. Thank you, Honorable Chairman, sir. I want to bring to the attention the need to ensure protection of all rights of patients from the arbitrariness of private hospitals. Indian Constitution guarantees fundamental rights to each and every citizen of India. Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to life and personal liberty. The Constitution of India does not expressly recognize the right to health as a fundamental right under Part 3 of the Constitution. However, through judicial interpretation, this has been read into the fundamental rights to life and personal liberty, Article 21, and is now considered an inseparable part of the right to life. The right to health is inherent to life with dignity. Article 39E, 41 and 43 of Directive Principles of State Policy put the obligation on the state in order to ensure the effective realization of the right to health. Despite constitutional provisions of the right to health care, private hospitals deal with the citizens in an arbitrary manner and violate their basic rights. If the patient's family is unable to bear the hospital expenses, it has been noticed in most of the cases that until a patient or his or her relative end up paying the bill, the patient is not discharged and held in the hospital even if they are unable to do so. For instance, in November 2020, a woman patient after her delivery was held by a private hospital at Kushinagar in Uttar Pradesh for not paying the hospital bills. The patient's family had to approach the police administration in order to get the women free from the hospital. In August 2019, another patient was held by the Apollo Spectra Hospital of Delhi for non-payment of bills post-surgery. Not only this, there have also been many cases of seizing dead bodies. Such an incident reported last year from the Shahdol district of Madhya Pradesh, where the doctors of the Devanta hospital took the dead body under their charge, and just because the relatives of the deceased could not pay the hospital bills in time. Similar cases are also being registered from other parts of the country, where the patients are met with inhumane conditions. Certain cases have been brought to light where patients have been tied to the bed by the hospital administration for non-payment of bills, and doctors ignored the patient's health by showing negligence in their treatment. In this regard, the Devesh Singh Chauhan versus State in the other cases, Delhi High Court in 2016 held that no hospital can hold a patient under any circumstances, even if it is a case of non-payment of bills. Along with this, it is also unambiguously mentioned in the Charter of Patients' Rights prepared by NHRC that the patient has the right to be discharged. Patient cannot be held by the authority of the hospital under any circumstances. The report on the Competition Commission of India in 2021 states that the charges of renowned hospitals like Delhi, Fortis, Max, Apollo, Sir, Gangaram, St. Stephen's, etc. are very high. These hospitals charge thousands of times more. Dr. Shantanu Sen. Thank you, respected Chair. Good morning, one and all. My topic is on the amount that the government of West Bengal is supposed to get from the central government, which is definitely known to you, sir, that as because you happen to be our learned and beloved governor at that point of time. Sir, on 18th of November 2021, our Honorable Chief Minister has met with our Honorable Prime Minister, and thereafter on 5th of August 2022, once again she has given all the documents, which has shown that there was a dues amount of 1,0968 crores, sir. If we can categorize for the welfare project like Narega, it was 6,561 crore. For Amphan calamity, it was 4,200 crore.
For COVID and other natural calamities, it was more than 6,000 crore. For Narega, I have said for PM Awas Yojana, it was more than 9,000 crore. For PM Gram Sadak Yojana, the dues were more than 2,000 crore. For midday meal, the dues were 174 crore. For Swachh Bharat Mission, it was 344 crore. For food subsidy, it was more than 1,200 crore. For PM Janavikas Karyakram Yojana, it was 44 crore. And the ongoing Geleghai Kapaleshwari flood, it was 178 crore. Said, since then till now, only a meager amount has been cleared, sir. At the same time, sometimes the funds are getting released at the fag end of the financial year, leading to complication so far the implementation of the project is concerned. So far the PM Awas Yojana is concerned, till date, we are supposed to get the first installment for more than 11 lakhs 33,000 houses, sir. So far the Narega is concerned, we have seen there has been a slash down of this budgetary allocation by 33%, though it is the largest social welfare project, sir. We can easily record the PM's comment regarding Narega, but unfortunately, we are yet to get a huge amount for this Narega project, sir. Sir, though West Bengal happens to be one of the best performing states, but because of political vendetta, West Bengal has been facing this financial blockade from this government of India, sir. Sir, we have been facing several central agencies. Midday meal is facing CAG audit, but PM Chaos Fund is not facing any CAG audit, sir. This is very unfortunate, sir. So far the name changing is concerned, this government is the pioneer of changing the names of several projects, sir. My humble submission to the government, don't do this vendetta politics with the best performing state like state of West Bengal, which is doing its best under the leadership of Madam Mamata Banerjee. Kindly clear the dues for the social welfare projects which you are supposed to clear, sir. This is our humble submission before the government. Thank you very much. Siri Tiruchi Siva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, the health workers comprising of the doctors, the nurses, and the hospital staff are a vital part of the society, and they work selflessly and are considered to be the living gods on earth. So, but these health workers are constantly undergoing violence, sir. They face frequent violence in their workplace, not only physical violence, sir, but also damage to the hospital clinical establishments. Sir, according to a survey conducted by the Indian Medical Association, 75% of doctors surveyed had suffered at least one form of physical violence in their entire career. And most of them are done by the family of the patients. Sir, several factors contribute to violence against healthcare workers, including infrastructural gaps, weak security apparatus in clinical establishments, delayed response by law enforcement agencies, insufficient facilities of counseling attendance, unregulated entry of trespassers, lack of stringent legal provisions, and overburdened doctors. Sir, an amendment was made in the year 2020 in the Epidemic Diseases Act. Despite that, sir, the intensity is increasing day by day. Sir, the amendment merely safeguards also only violence against the situation during an epidemic situation. Sir, I urge the government, it should proactively work towards ensuring a safe environment for the health workers. Sir, it has to consider adding norms for hospitals to have security measures, including CCTVs and well-defined restrictions on the entry of visitors, and must also include cyber trial. Additionally, sir, these offences should be made as non-bailable. At present, sir, these cases are dealt only by very lenient IPC sections. Sir, before the punishment is given, everything gets slapped. Sir, 21 states and union territories already have a law in place, but we need a law at the union level, sir, to have a uniformity. Sir, the increasing frequency of cases is not only detrimental to them, sir, but of course, it shatters the edifice on which a doctor-patient relationship results, which is their faith. Sir, their dedicated involvement may also get disturbed. So taking all these into consideration, sir, the government, I urge again, ought to introduce a legislation in their favor that will instill
the long lost confidence in the minds of the medical fraternity. Thank you very much. Shri Rajendra Gehlot. माननीय सभापति जी वो मैं आपका ध्यान मेरे राज्य राजस्थान में हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसल बर्बाद होने से हुए नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में ओलावृष्टि से सबसे बड़ी मार किसानों पे पड़ी है। जनवरी माह में के अंत में राजस्थान में हुई भारी ओलावृष्टि और बरसात के कारण लगभग 14 जिलों में करीब 15 लाख हेक्टेयर खेती खराब हो गई है, जबकि 109 लाख हेक्टेयर में हुई फसल प्रभावित हुई है। 65% फसल बर्बाद हो चुकी है। इसका किसानों की आजीविका अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। महोदय, राजस्थान सरकार को बार बार मांग करने के बाद भी इस फसल का जो आंकलन करके किसानों की मदद करनी चाहिए थी, वो मदद नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं कृषि व किसान कल्याण मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए किसानों पर आई हुई इस आपदा और प्राथमिकता देते हुए राजस्थान के किसानों को नुकसान का आकलन अतिशीघ्र करवा कर किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा वितरण अतिशीघ्र करवाएं की व्यवस्था करें, जिसे आपदा से त्रस्त किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद। Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, I would like to share the burning issues of agriculture workers in our country. So, highest workers in India is in agriculture sector. So, Mahatma Gandhi told us India is living in villages. But, sir, what is the condition of our agriculture workers in our country? They are not getting proper wages. They don't have enough employment in their village. Why it is happening, sir? Sir, the wage of agriculture workers, the average wage or per day wage is below than the price of the 1 liter petrol, sir. So it should be addressed. Sir, here, union government is not ready to provide any financial assistance for the upliftment of the agricultural workers in our country. Here, some states, like Kerala, they are introducing some welfare measures for agriculture workers. The agriculture pension is there. Agriculture pension is there in Kerala. There, 1,600 rupees is a per month pension for agriculture workers. Sir, why it is not implemented in Uttar Pradesh? Why it is not in Gujarat? So, agriculture workers pension, the government, union government should take the initiative for implement agriculture workers pension. The agriculture workers welfare scheme, what is the condition all over India? The welfare schemes. So agriculture, the children of agriculture workers is studying in very pathetic condition. Their education facilities are very bad shape. Their health facilities in villages are very bad shape. So agriculture, for the upliftment of the agriculture workers sector, the intervention of the government, union government is very necessary. Mahatma Gandhi Gramin employment scheme, guarantee scheme, what is the condition now, MGNREG? So day by day, we are hearing the news of reduction of fund allocation and the programs and projects. There, the duty of the union government is to provide the fund to the state government for the welfare scheme of the agriculture workers. Basically, they are the real annadatas of the nation. You don't forget the real annadatas of the nation. Sir, the salary of the agriculture workers, it should be increased. So the financial assistance of the union government is very necessary for that. In education sector, so children of agriculture workers in studying in villages without pakka building.
So government should provide special scheme for agriculture workers' children. Well, government should provide the health facilities for them. Each and every village, special care, health care centers, government should arrange for agriculture workers. Thank you, sir. Thank you. Shrimati Shanta Chetri. Thank you, sir. My subject matter is demand for inclusion of Lepcha language in 8th schedule. Khambrimo, sir, it means in Lepcha language, namaskar, for allowing me to speak. I would like to draw the kind attention of this august house that Lepcha is a Himalayas language spoken by Lepcha people in Sikkim, parts of West Bengal in Darjeeling and Kalimpong. The United Nations National Scientific and Cultural Organization, UNESCO, lists Lepcha as an endangered language. The Lepcha language is spoken in Sikkim and Darjeeling and Kalimpong district in West Bengal. Sir, the 1991 Indian census counted 39,342 speakers of Lepcha. Lepcha is considered to be one of the indigenous languages of the area in which it is spoken. Lepcha people have their own indigenous script. I humbly urge the August House to draw the kind attention of the Honorable Prime Minister to include the long pending demand of Lepcha people to include their language in 8th schedule. This will ensure the preservation and growth of the rich language. Toximo, sir, that means thank you. Dr. Dharmsthal Virender Hegde. Honorable Speaker, sir, thank you for this opportunity. India is a country of villages and has the traditional medicine system Ayurveda. People across the country are following traditional Indian medical system of Ayush. Ayurveda is called the science of life, plays an important role in maintaining physical well-being and resisting diseases. The government should launch health awareness campaigns to promote physical activity, walking, and encourage people not to follow a sedentary lifestyle. Use of plants as a source of medicine has been an ancient practice and is an important component of the healthcare system in India. In India, about 70% of the rural population depends on Indian traditional Ayurveda system of medicine. Most healers or practitioners of the traditional system of medicine prepare formulations by their own recipes and dispense to the patients, improving the information and services provided in local pharmacies that are the primary source of treatment for many ailments in rural areas might serve as an effective substitute for allowing an unregulated use of conventional medical treatment. The government campaigns should aim to promote Ayurveda and Yoga as disciplines to help lead a healthy life. The government should launch a scheme in rural areas to popularize Ayush-based lifestyles, which are promoted through behavioral change in communication, training of village health workers towards identification and use of local medicinal plants, and provisions of Ayush health services. What are the measures taken by the Ministry of Ayush for further propagating the natural medical system, especially in rural areas of the country? Whether the government has prepared and distributing authentic publicity material on Ayurveda and Yoga, including new media, internet, multimedia, print media, and digital media campaigns, and setting up platforms for the same. There is a need to revisit the state policies to further strengthen the traditional healthcare systems in the country. In view of the rising demand for Ayush modalities and therapeutics, the limitations of statutory regulations towards Ayush system need to be relooked. The Ministry of Ayush should devise mechanisms for centralized data collection and real-time monitoring with the states and UTS. It is evident that the Ayush system has a countrywide network and is playing a very important role in the mitigation of diseases with low cost. Ayush preventive measures play a vitally important role in maintaining the well-being of people. Various treatment modalities support the existing standard treatment protocols. Even
some other countries are attracted toward this, and I wish that there is attention will be paid to this. Siri P. Wilson. Chairman, sir, I raise to bring to the kind attention of this august House the issue relating to the abolition of toll plazas on national highways across the country. Sir, I made a special mention in this august House requesting the abolition of toll plazas across the country and collect a one-time fee at the time of registration of the vehicles, and to ensure that the right to travel, which is a fundamental right, is accessible and available to all. On 15/11/2022, I received a response from the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways in which he assured that in respect of the public funded project, the fee leviable would be reduced to 40% of the user fee, which means 60% of the fees alone will be collected in these toll plazas. Sir, I'm thankful to the Honorable Union Minister. However, I would like to place on record that this has not yet been implemented till today, thereby causing hardships, financial burdens to the peoples who have no choice but to use the toll roads and shell out huge money while crossing the toll plazas. Especially those living adjacent to the toll roads have to use the roads every day, and despite monthly passes available, it is still expensive for the common man. Sir, in Tamil Nadu, I can give two examples where even after realization of the investment, they are collecting even for 15 years. They are Paranur and Athur on Tambaram, Dindivanam, NH 45, and Nemili and Chenna Samudram on Punumali Valajapat, NH 4. Sir, as per National Highways rules, two toll plazas within 60 kilometers is prohibited. In the said letter returned to me, the Honourable Minister has mentioned that the issue raised by me with regard to the toll plazas being located within less than 60 kilometers distance of each other would be resolved. However, in Tamil Nadu, out of 48 toll plazas located, as per National Highways rules, there could be only 16 toll plazas. Thus, there is an excess of 32 toll plazas. In fact, National Highways Authority of India itself has identified 22 toll gates located within 60 kilometers of adjacent plazas on 13 national highways in Tamil Nadu, and these toll plazas are yet to be removed. Sir, ultimately, the lower economic class and middle class are suffering. Small-time vendors, lorry operators, and transporters are spending huge chunks of their monthly budget towards toll. These are people who even pledged their jewels to make ends their meet. We should not put the burden of paying for road infrastructure on them. Sir, the problem is not only in Tamil Nadu, but it is seen in pan-India. There are more than 1,000 toll plazas in India. These are toll plazas in which public is compelled to pay toll plazas for incomplete facilities, that too at exorbitant rates. To make matters worse, NHA increases toll plazas mechanically year by year. There is no independent regulatory authority which determines the toll fees. The formula adopted to justify periodical increase of toll fees is higher unscientific, no rationality, and is highly arbitrary. An official in the cadre of Deputy Secretary simply raises a mathematical formula found in the concession agreement and keeps on increasing the toll fees mechanically. Even the state government's public transports are charged. So therefore, the time has come where all toll plazas have to be abolished completely, as it hampers free movement, development, and industrialization. I urge the Honourable Transport Minister to look into this matter urgently. Sri Jose K. Money. Thank you, sir. Yes. This is about a severe crisis faced by the fishermen community. There are about 28 million people in the country rely on fishing for the livelihood. In Kerala itself, there are about 11 lakh fishermen. The worst flood which hit the Kerala in 2018, they rescued about 50,000 people who were in the verge of death. So the livelihood of the fishermen community is getting hampered due to erratic weather condition, threat of climatic, cyclonic storms, coastal erosion, excess tourism and development projects, which leads to large-scale displacement of fishing community. They have been hit hard by the aggressive trawling by the foreign fishing vessels and commercial fishing. The families are in constant danger of displacement. We take the case of tribal communities. The right of our forest resource were recognized by the Forest Right Act 2006. The act recognized the symbiotic relationship of the tribal communities with the forest. They are given individual as well as community rights for the forest resource. In the same way, sir, the fishermen community had the traditional right over marine resources. They are sons of sea. However, there are no laws currently in place to protect their rights. In this regard, I would urge the government to come up with a suitable legislation in the lines of the Forest Right Act to recognize the right of fishing community over marine resources.
Thank you. Question number 76, Sri Jose K. Mani. Question number 76. Honorable Sir, Minister. the reply is laid on the table of House. Supplementary 1. So the laminate minerals have extensive application in atomic energy, defense and space sector for various strategic purposes in the country. In the draft proposal for amending the Minerals Act 1975, government has proposed to revoke its 2019 ban on private entities. Just days before the draft proposal was placed before the public consultation, it is alleged that the two new companies dealing with the same strategic important rare materials have been registered by the leading corporate company, which is already facing an allegation. So this will definitely opening up this area. Please ask your supplementary. Yeah, I'm coming. This is the question, sir. Opening up the strategic mineral sector to private entities against national security. What is the government stand on the proposed amendment, and does the government have any plans to reconsider its decision regarding opening up this critical sector to private entities? Honorable Minister. Chairman, sir, through you, I wish to inform the honorable member that, as he rightly mentioned, ilmenite has a varied properties. It's used in paint, in paper, also nowadays in the aviation sector, in the making of aircrafts, even the health sector, the making of implants. But as such, there has the price of the ilmenite, which is available from 3 states, primarily Kerala, Odisha, and Tamil Nadu, is determined by the market dynamics. And the Kerala government had actually put a rider that they should be given the first preference. Only after that, it is available to the other entities. In Kerala itself, we have 2 PSUs, and one is the private sector. And rather, I would say that I would solicit the help of the state government there. We have certain constraints in making full utilization and full exploration of it. A, because of the dense population in those areas, the surface rights of the landowners come in the way they do not always allow. But more importantly, the Kerala government had given us this lease way back in 1970. And the lease was for 4 blocks for a period of 20 years. Then it got renewed in 1990, again 20 years. Then the renewal was due in 2010, but it was denied. 2 blocks were totally denied. The other 2 blocks were given permission or lease only for 5 years. So 5, then 5, then 5. There's the third segment of 5. So the constraint actually is happening from the side of the Kerala government rather. And that is true for PSU. Yes. Yeah. And there are 2 PSUs. One is the Travancore Titanium. The other one is Kerala Minerals Limited. Kerala Minerals and Metals Limited. So now, in fact, the Travancore Limited is putting pressure on us that they should be getting price which is available for the limonite or the titanium available from Odisha coast. Now, incidentally, the scientific fact is that the eastern coast is richer in the mineral, but the content is lesser. So here the overall quantity may be lesser, but the content inside is more. And therefore, the price is not effective or manageable. So I think that is the reason. In fact, the constraint on the functioning of the IREL is coming more from the preferences which have been put forward by the state government rather than IREL per se. Honorable member, second supplementary. Sir, I have not asked for the price details. I've asked for a single direct question. It is a strategic component in the atomic energy. Whether the government is planning to lift the ban which is on the private entities. That is my question. He has not answered to that. So my second supplementary, what are the steps taken by the government to protect the public sector undertaking like the IREL,
which produce strategic important rare minerals used for the atomic energy purpose. Strategic commodity it is, whether government plans to private this sector in future. This is a Honorable direct Minister. question. No, as I said, to add to what he was mentioning to the earlier question, there is only one private company there in Kerala to which the mineral is made available only after the government-run PSUs have exhausted their demand. That was our commitment. We are sticking to that. The lack of commitment if happening is from the other side. Now, as far as the protection of these minerals are concerned, I agree with him. These are B sandy minerals. And we are, in fact, equally careful, cautious about this because out of these 7 beach minerals, one is monazite, which is also a source of thorium. And India happens to be the storehouse of thorium in the sense that we have 21% of it. And we are also looking forward to have world's first ever thorium-run reactor in the form of Bhavani, which is also going to be made functional by next year or 2024. In fact, I would use this opportunity to say that out of the 22 reactors that we have in India today, as many as 10 to 11 were established only during the last 8.5 years of this government. Not only that, no, yes, but I can add to, yes, I'm adding to the answer. And secondly, what I'm trying to say is the intent of the government is so clear, so sincere, and so committed. The irony, sir, is that the first ever agreement for a reactor establishment was done way back in 1988. If you go back in the history, that was Kandakalam. But the construction work, and then construction work started in 2011. 2001. And till then, it had not been made functional. It was only after this government came, within 6 months, in November 2014, we made the first unit functional. Now the 4 units are already functional. So I think we are moving on a fast track, trying to make up for the lapse or the time slag of the past governments, also living up to the commitment and the national interest. We have, in fact, fortified our means and our mechanism of guarding these metals, as you were saying, referring to your question. We are not only now using the radiation methods or the radio checkposts. We are now also using space technology to detect any pilferage of these minerals happening. Dr. Fozia Khan. Dr. Fozia Khan. Unanswered question. Now it's over. Sir, since the Honorable Prime Minister is here, I would like to take liberty to ask a question about something which is near my neighboring district. There's एक भारत की पहली LIGO लेजर इंफोरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी है जो हमारे औंढा नागनाथ के तुधाला गांव में एस्टैब्लिश की जा रही है और उस ऑब्जर्वेटरी का विशेषता ये है कि ये दुनिया में तीसरी लेबोरेटरी है। ये इससे पहले 2 जो है अमेरिका के बाहर है, मौजूदा हैंसफोर्ड वॉशिंगटन में और लिविंगस्टन ल्यूजियाना में स्थित है। सर 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस पर स्पेंड हो गए हैं। मेरी विनंती है कि अगर ये काम हम इस G20 के वर्ष में करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ये एक बहुत फेदर इन द कैप हो सकता है। 100 करोड़ स्पेंड हो गए हैं, 1200 करोड़ इसमें लगने वाले हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री इस विशेष प्रयोगशाला के लिए आगे काम बढ़ाएंगे? Honorable Minister. The question of the honorable member refers to one specific laboratory. I think we'll get the update and furnish it to her because it's not directly related to the department of the question. Sri V. Vijay Reddy. Sir, thank you for the opportunity, sir. I'm very happy that Honorable Prime Minister is present. Sir, now that Honorable Minister has agreed that there is a private sector. Sir, your question. That's sir. Honorable Minister has stated in this August House that the private sector is allowed in the mining of sand minerals.
Sir, since the government is allowing the private entities to engage the mining beach sand minerals like limonite sand, which are considered to be one among the seven which are very important, the Honorable Minister has said, sir, strategic rare earth minerals. How does the government of India intend to regulate this industry, because private sector is there, so that it does not lead to unfair practices? Honorable Minister. Thank you, Chairman, sir. I think the concern of the honorable member is well taken. But he would also appreciate that if you go by the sequence of events of the last 7, 8 years or 9 years, there has been considerable improvement. There was a time around 2013-12 when most of the newspapers published from Chennai had every fortnight one or the other news reported about some smuggling happening over there. Because the irony is that out of these 7 minerals, some of the private parties would secure a license to dig out granite for building purposes. But in the garb of that, they would also take out monazite, which is actually required for the thorium, for uranium-233, and therefore for the nuclear reactors. But after this government came in, we have supplemented not only the existing safeguards, but as I said, even we have now started using the other means like space technology, because through space technology, through satellite imaging, you can determine the different shades of the minerals, and any suspicious activity happening there can be detected. Thirdly, I would also, again, coming back to what I was saying in response to the first question, the law and order also pertains to the state government. So we are repeatedly requesting the concerned state governments to be more cooperative, because the police deployment and the other features are under their control. But we are very cautious about it. And regardless of whether it is a private party or a public sector unit, I think the caution remains the same. Shri Ilamaram Karim. Thank you, sir. The strategically important rare earths are available at seashore. Kerala seashore, as you said, it is thickly populated. Whether government has conducted any ecological study, what will be the impact of private concerns mining at the seashore? Whether government has conducted any study? If yes, will you provide a copy to members? If not, before giving permission to private hands for mining, a proper study on ecological impact should be conducted. Honorable Minister. I think the honorable member's concern is well taken, but I would like to share with him that this is something which is been there right from the beginning. And we have something called Atomic Energy Regulatory Board, which is the overall umbrella under the aegis of which the IREL also functions. So not only this, even in other issues like this, which require to be guarded or to be monitored, I think the due exercise is done. And wherever the mining is done, in fact, I would rather solicit the support of the cooperation of the public representatives, because some of the places we get undue apprehensions being created in the public mind when we undertake a project. Like, for example, we have a huge source of uranium in northeastern state of Meghalaya, which got stuck up. In Rawalbhata, we were about to put up a plant which has been stuck up for the last 2-3 years or so. And therefore, all the due caution is taken wherever this mining is done, or even the reactor is set up. But it's only the apprehension which happens. Sometimes somebody says that there will be now epidemic of cancers happening or something like that. Though we have provided them studies to the contrary, we did a small in-house survey to see how many scientists working in Bhava Atomic Center died of cancer due to radiations. And you would be surprised, we found none. There were only 2 or 3 unnatural deaths happening, and 1 or 2 cancers which were not related to radiation. So I think it's a responsibility of all of us to allay these fears. In some of the foreign countries now, the mining and the reactors are being established even in the residential colonies or in their close vicinity. Shri, question number 77, Shri Mohammad Nadimul Haq. Question number 77. Sir, a statement is laid on the table of the House. Supplementary one. Sir, the Comptroller and Auditor General of India has pulled up the Ministry of External Affairs for revenue losses and improper financial management in a recently released audit report. So my question is,
does the ministry have any planned compensation mechanism in order to recover the revenue losses of rupees 58.23 crores occurred because of misapplication of fees in the OCI card scheme? Honorable Minister. Sir, I would like to inform the honorable member through you, sir. The Ministry of External Affairs extends a number of consular services for passports, visas, consular services, attestations, OCI, PIO. Each of this is a charged service. Now, because these are rendered outside the country, there are rate of exchange issues which come up. Now, these are all services which came up at different points of time. So typically they were handled, the instructions in each case were sent individually. Now, in 2017, instructions were sent regarding, because whenever there is devaluation or revaluation, there's a refixation of the rate of exchange. In 2017, instructions were sent regarding refixing of the rate of exchange. Now, the CAG paragraph, sir, and I want to say here that my own experience of audit and of CAG, I believe they are a very essential part of good governance. They help us to look at imperfections in our process. So CAG brought to attention two sets of issues. One related to UK. Now, in the case of UK, there should have been, according to the CAG report, a 23% increase in the fees which were charged. But our mission in UK took the view at that point that this would have a very dampening effect on the tourism from UK to India, and therefore limited it to 10%. So they did it for what they considered to be policy reasons. 17 other missions and posts in Europe, in their particular case, they were under the assumption that the instructions applied to visas and not to OCI. So they did not make the necessary changes. Now, when this matter has come to attention, we have actually, before the matter was actually taken up by CAG, sir, we had issued instructions in 2020 to rectify the process. So what we have tried to do is to put systemic checks, because that is the nature of the CAG process. The CAG wants us to make corrections so that such a mistake will not happen again. So we have instituted quarterly reporting, which is monitored through the e-Samiksha process, so that the rate of exchange on all services is monitored quarterly. Every month, the head of the consular wing is also required to report to the head of mission or head of post. And there's a mandatory revision every April, so that whatever happens, it is not slipped up due to bureaucratic delay. And there's a unified rate of all services, so that this kind of situation will not occur. Supplementary 2. Sir, there has been setting up of Indian cultural centers abroad. In Washington, D.C., at a cost of $5.75 million in 2013, a center was taken up. And in Paris in 2011, it was taken up, which is now encroached. Sir, in the answer, it has been given that these properties have faced certain challenges in preparing them for their intended use. Your question. So my question is, sir, what is the plan of action and why such a casual answer has been given? Honorable Minister. Sir. Honorable Member, Sir. the answer was very comprehensive. I'm sure you'll take note of it. And if there is an issue, you may discuss with the Honorable Minister at mutual convenience. Honorable Minister. Honorable Minister, please. No, please. Honorable Minister. Sir, sir, in the case of the property in Washington, it was acquired in 2013. Now, in the case of the property in Paris, it was acquired in 2011. Now, typically, and they were acquired for the purpose of cultural centers. Now, typically, sir, when properties are acquired, not built greenfield, they need to be modified for use. And that is the information which I was trying to convey to the honorable member through my answer, that there was a
modification required to make it ready for use. Now, in the case of the Washington property, sir, what happened was after the acquisition of the property, a certain set of issues came up while the matter was being processed. There were waterproofing issues, there were asbestos concerns, there was conservation work which was recommended by the architect we were looking at. And in all of this, we also faced a problem that the general financial rules of the Government of India was at variance with American practice. For example, our rules require us to take earnest money deposit, to seek a performance guarantee bond, to seek retention money, and these are not American practices. So by the time we resolved this, we actually had two issues then which came up. One, the Americans made us an offer of additional land in Washington, D.C. So then this raised a question whether we should go ahead with this project or whether we should be looking at the new land offer, which we got in 2019. The second issue was COVID, because of COVID, everything was at standstill for 2.5 years. So I would like to assure the member that since we have a property, we are giving instructions for its usage by the embassy so that a government asset is not rendered infructuous. Now, regarding the property in Paris, sir, we had, again, some very peculiarly French problems. One was the tendering practices in France are very different from us. They do not allow a general contractor who has overall supervision. So they insisted that the tender had to be split up into 15 packages, which were awarded to 10 different companies. Now, it was unfortunately, sir, a problem that one of the companies, which was in charge of structures, partitions, ceiling, and facade, went bankrupt. Now, in our country, by our procedures, we could have awarded that work to another contractor. In the French system, sir, till the liquidation was done, and the court of liquidation appointed another company to do that work, and that company then raised the price. We had to follow the French practices. So, but I would like to assure the honorable member, sir, that this project is 95% done. There are challenges when we work abroad and we have to reconcile their practices with our rules. I think we have tried to do our best under these circumstances. And I'm sure when the CAG paragraph is examined, including by the PAC, these will be issues which will be presented. Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इंडिया इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यद्यपि हम प्राइमरी लेवल किताब में पढ़ते थे, लेकिन पहली बार भारतीय राज्य ने इसको असर्टिव तरीके से इस नैरेटिव को रखा है। क्योंकि जब हम देखते हैं यूएस में, तो व्हाइट हाउस में लिखा रहता है कि आवर फाउंडर्स लुक्ड एट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दैट इज ग्रीस। Your question. So this is unsettling the entire civilizational discourse. तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये जो हमारे कल्चरल सेंटर है, वह विदेशों में डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कोर्स को महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में जैसे हार्वर्ड हुआ, कैम्ब्रिज हुआ, शुरू करेगा? माननीय मंत्री जी. Sir, I would like to inform the honorable member through you that this matter has been discussed by us with the Indian Council of Cultural Relations. We have already initiated activities with various institutions abroad through our cultural centers to emphasize the message that India is the mother of democracy, that we have a pluralistic and consultative tradition, which very few societies, if anybody at all, can match. And this is very much work in progress. Shri P. Bhattacharya ji. I would like to know, Honorable Minister, as you have said that in Paris and Washington, the Indian Cultural Center facing some sort of problems, etc. I would like to know from you, besides this Washington and Paris, how many other countries we have this type of cultural center and who are actively functioning of spreading the Indian culture in other part of the world? Honorable Minister. So I do not have the exact number readily with me, but by memory, I would say we have about 45
designated cultural centers. But I would also like to inform the honorable member that today every embassy and every consulate of India undertakes cultural work. So even if there is not a separate autonomous cultural center, cultural activity is very much part of the diplomatic mandate. It is being pushed very vigorously. And we have, again, sir, seen a very big change in the last decade. And that is something which is very noteworthy. Srimati Seema Dwivedi. महोदय, जो सवाल हम करना चाहते थे माननीय सिन्हा जी ने किया और बहुत अच्छा उसका उत्तर आया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी को, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। Question number 78, Shri Johar Sarkar. Honorable Minister. Statement is laid on the table of the House. First supplementary. Sir, I asked for a specific question, specific reply to the ongoing differences between the Supreme Court and the executive. We as the legislature have the right to ask these questions, but what I get by way of reply is it requires consultation. Of course, we know it. And differences of opinion, if any, are mutually reconciled. So am I to understand that all differences are mutually reconciled? And in the same sentence, you have used the word that only the appropriate Honorable person member, is appointed as please the ask judge. your supplementary. Sir, वही supplementary मैं पूछ रहा हूँ. Please. Do you consider Victoria Gowrie's appointment to be really an appropriate person, one who has been accused in public of casteist remarks, of remarks against minorities? Some decorum. An honorable judge who has been duly appointed through a process. I don't think we as honorable members here should be casting aspersions of this nature. Sir, I seek your indulgence. I ask because this is in the public domain. Honorable. Everybody on earth knows that Victoria Gowrie's opinions have been challenged Honorable by the member, majority. honorable member. You cannot wish it away saying that Honorable, this is not proper. honorable member. Honorable member, please. The three wings of the state, legislature, executive, and judiciary, they have to act in tandem and togetherness, and we must have mutual respect for them. All three ultimately have to get together to fructify our goals. When it comes to judiciary, with respect to which a judgment of the highest court has already come, I'm sure that issue should be kept away. I would urge the honorable member to ask his supplementary in a pointed manner, keeping in mind the provisions that judicial situations have to be addressed in a delicate manner. Please. With delicacy, I'm saying. No, you are making reference, honorable member. Sir, I'm saying. No, you are making reference to an individual who is not a member of the House. Sir, you are making reference on which the honorable president has issued a warrant this is a of appointment. thing known The Supreme all Court over has India. taken already a view on that. Whatever be it, mistakes happen. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, you have very rightly made the observation that there are certain sensitive matters which we have to bear in mind when we speak in this august house. And the leader of the house also. You have been not called by the chairman to speak. Sir, the question the honorable member has raised, honorable member is a former senior bureaucrat, so I expect that he need not be told the rules and regulations and decorum. However, his question was very specific. He was asking about the conflict between judiciary and executive. Now, this is a vague kind of question. In a way, if there are differences in opinion, and that is very much part of the democracy. Within a family, within political parties, there are differences of opinion. So when there are solutions to that also. So his question was not anything which he wanted to know from the government in terms of any figures, facts. Honorable member, asking about second the situation. supplementary. The minister has not replied correctly. I asked for sharp points of difference, not conflict.
So don't put words in my mouth. I asked for sharp points of difference that has not been responded Honorable to. Minister. And sir, one more, sir. One more to this, that he has mentioned about 127 proposals of High Court judges that are lying vacant. When will they be taken up? Honorable 18 Minister. proposals have been rejected. Honorable Minister. Sir, while I am speaking in this house today, there are 210 vacancies in various high courts. In terms of the numbers of the vacancy, I can say that once the names are recommended by the collegium, 3 members collegium in the High Court, then it proceeds as per the laid down procedure in the memorandum of the procedure. Shri Sushil Modi. So, sir, these 210 names, he is asking about the vacancies. We have not received the proposal, so there's no question of any sharp differences. Shri Sushil Modi. सती महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये बात सही कि 6 जनवरी 2023 को भारत सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और जिसमें यह आग्रह किया कि सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी में भारत सरकार का और राज्य सरकारों का प्रतिनिधि रखा जाए, जिसके द्वारा कॉलेजियम जो जजेस की नियुक्ति की जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। और उसकी क्या स्थिति है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, आपको इस चीज का विदित होगा कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस हाउस के द्वारा पारित किया गया, यूनानिमसली जो पारित किया गया एनजेएसी और 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दोनों को स्ट्राइक डाउन किया था, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे और कुछ डायरेक्शंस दिए थे। उसी डायरेक्शन के मुताबिक और उस डायरेक्शन में क्लियरली लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग एमओपी को सप्लीमेंट किया जाए, इम्प्रोवाइज किया जाए, और उसी में यह भी कहा गया कि सरकार को पहल करना चाहिए कॉलेजियम के साथ। उसको फॉलो करते हुए मैंने एक पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र को कुछ समाचार और पत्र में या किसी एक फोरम में गलत तरीके से पेश किया गया, तो ये न्यूज़पेपर के आधार पर अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, my question is very simple, but very important. Would the government consider the possibilities of introducing the reservation policy in the appointment of judges? Honorable Minister. Sir, as per the existing policy and provision, there is no reservation in the Indian judiciary. However, I have already reminded all the honorable judges, especially the collegium members, to keep in mind while recommending the names to include the members from backward communities, women, and other categories which are not represented adequately in the Indian judiciary. Shri KTS Tulsi. Honorable Chairman, sir, thank you very much for giving me this opportunity. It's an important issue, and I want to place before this House and before the Minister the statement made by Mr. B.R. Ambedkar with regard to the appointment of judges. It's very important. With this statement, Dr. Ambedkar says, with regard to the question of concurrence of the Chief Justice, it seems to me that those who advocate that proposition seem to rely implicitly both on impartiality of the Chief Justice and the soundness of his judgment. I personally feel no doubt that the Chief Justice is an eminent person. But after all, the Chief Justice is a man with all the failings, all the sentiments, and all the prejudices which we as common people have. And I think to allow the Chief Justice practically veto on the appointment of judges is to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to do, which we are not prepared to veto. Then there is Justice Krishna Iyer, who has expressed himself. But this is in public domain. Your question to the Honorable Minister. No, my second question, with regard to the same issue, is the quotation from Justice Krishna Iyer on the appointment of judges. And Justice Krishna Iyer says, there is no structure to hear the public in the process of selection. No principle is laid down. No investigation is made. And a sort of anarchy prevailed. Is Honorable that right? Minister.
Sir, I share and endorse the sentiments made by Honorable Member Tulsi and also what he has quoted from the debates of the Constituent Assembly, especially Dr. B.R. Ambedkar ji. However, we all know how the provisions of the Constitution got changed, especially in the second judge's case, which is known as the Advocates on Records Association versus Union of India case. And that where the word consultation was transferred and changed as concurrence. And further, the president reference was made to seek clarification on the exact meaning of the consultation. And it was elaborated and further expanded in 1998 by introducing the collegium system. So what was transpired in the Constituent Assembly and what was being introduced and which we still practice, there is a big shift. But however, since we are not discussing about the judicial appointment and the matters related to, it will be difficult to respond to the quotes which honorable member has made, especially about Justice Krishna Question Iyer number and 79, Shri Mujibullah Khan. 79. Honorable Chairman, Minister. sir, the answer is laid on the table of House. Supplementary one. थैंक यू सर। मैं राज्यसभा आने के बाद सर ये पहला स्टार क्वेश्चन मेरे भाग्य में पड़ा है। सप्लीमेंट्री। और मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज सदन पर मौजूद है, उनके उपस्थिति में मेरे को पूछने का मौका मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पावर रिएक्टर्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारे कर्नाटक और हरियाणा, ये 4 राज्यों में चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी उसमें आंसर दिए हैं कि 2031 को ये रिएक्टर्स कंप्लीट होगा। तो मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि ये सब प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ था, ये रिएक्टर्स का काम कौन से साल में शुरू हुआ था और कब खत्म होने के लिए टाइम उसका फिक्स किया गया। ऑनरेबल मिनिस्टर, इस बीच में अगर टाइम ज्यादा चले गया है तो कितना हमारा और पैसा एक्स्ट्रा लगा, नुकसान कितना हो रहा है। सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य का अभिनंदन है और जो उन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर तो उनको उपलब्ध करवा दिया गया, लेकिन इसमें कोई अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि सन 2017 में मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृति दी गई थी और कुल मिलाकर के 1,05,000 करोड़ की लागत से ये सारे प्रोजेक्ट्स बनने हैं, जिसमें 2 रिएक्टर कर्नाटक, 2 हरियाणा, 2 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। अब 2031 का जो लास्ट डेडलाइन है वो फेज्ड मैनर में है। उसका अर्थ ये नहीं है कि सारे के सारा फंक्शनल उसी साल में होगा, धीरे धीरे फेजेस में ये काम चलेगा, लेकिन ये निरंतर इसकी प्रगति हो रही है। क्योंकि इस सरकार का सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अनेकों ऐसे कारण जो पहले विलंब पैदा करते थे उनकी भी चिंता की है और इसीलिए आपको जानकर के खुशी होगी और आदरणीय सदस्य को भी कि 2013-14 में जब ये सरकार आई थी तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर के जनरेशन जो एटॉमिक एनर्जी की होती थी वो थी 35,333 मिलियन यूनिट, जो आज बढ़कर के 47,112 हो गई। अर्थात 60-65 वर्ष में हम केवल 35,000 तक पहुंचे थे और 8 वर्ष में हम 12,000 की उसमें इजाफा हुआ। इसी प्रकार, और ये इसलिए संभव हुआ कि अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आउट ऑफ बॉक्स भी थे, पाथ ब्रेकिंग थे। उदाहरण के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया एक्सक्लूसिव फॉर एटॉमिक एनर्जी फॉर 10 इयर्स। इसके अतिरिक्त ये तय किया गया कि हमारी जनरेशन कैपेसिटी सन 2025-24 तक 3 गुना बढ़ करके हो जाएगी। अक्सर ये हमारे रिएक्टर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स सीमित थे दक्षिण के कुछ राज्यों तक या पश्चिम महाराष्ट्र में।
उनको देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाने का काम शुरू हुआ। जहां हम खड़े हैं इससे कोई 150 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा में गोरखपुर नाम के स्थान पर हमारा एक प्रोजेक्ट अगले 2 वर्ष के भीतर वो भी फंक्शनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये पहली बार इस सरकार के द्वारा हुआ। 2017 में जिस साल ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुए उसी साल 10 इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पूरे आत्मनिर्भर के मंत्र पर आधारित अप्रूव किए गए इन अ बल्क अप्रूवल। इतना ही नहीं, हमें दिक्कत आती थी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की। पहली बार जिस प्रकार से अंतरिक्ष को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया और एक बड़ा क्रांतिकारी एक निर्णय हुआ, उसी प्रकार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी जॉइंट वेंचर्स के लिए सन 2017 में खोल दिया गया। और मुझे खुशी है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए कि वर्तमान में हम इस प्रकार की 2 जॉइंट वेंचर्स में काफी अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं। एक हमारी एनटीपीसी के साथ है जो नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन है, और दूसरा इंडियन ऑयल के साथ। तो कहने का तात्पर्य ये कि बहुत तीव्र गति से, यदि आप मुझे कहें तो मैं कुछ और भी लेकिन शायद समय की मर्यादा रहेगी। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। मान्यवर मंत्री महोदय, हमारे जॉइंट वेंचर में जो पीपीपी मोड में किया गया है, हमारे पार्टनर्स कौन कौन हैं और ये पार्टनर्स आने के बाद हम लोग कितने सफलता हासिल किए? ऑनरेबल मिनिस्टर। पार्टनर्स एक बार दोहराएंगे? ये पीपीपी में पार्टनर कौन कौन है जॉइंट वेंचर में? शायद समझने में, मेरे समझाने में, इट इज नॉट पीपीपी मॉडल। अभी हमने जॉइंट वेंचर्स फॉर द टाइम बिंग खोला है विद द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। शायद वो आगे जाकर के उस पर विचार हो। फिलहाल चूंकि अभी तक तो ये पूरा गोपनीयता में काम करता था, तो 2017 में एक निर्णय लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जॉइंट वेंचर्स विद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और ये एनटीपीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दोनों ही पब्लिक सेक्टर है। पहले चरण में हमने इस तरह का एक प्रयोग और इसके अनुभव से फिर आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा। श्री जयराम रमेश। Sir, my question is completely non-political and I expect Sir, a completely non-political answer. I'd like the Honorable Minister to take the House into confidence. What is the status of negotiations with the French, which has been going on for a long time, for the construction of 6 1600 megawatt reactors at Jaitapur in Maharashtra? Honorable Minister. No, I think the question, as desired by the honorable member, he has desired a non-political response. But the question itself is laced in politics, because so much of the conflict of response, the views on the two sides happened because of certain geopolitical reasons. But we are very earnestly trying to sort it out, and we are moving forward. Question number 80. Shri Kanak Medala Ravindra Kumar. Absent. Minister. Honorable Minister. Honorable Minister. Honorable Minister, question number 80. Okay. Shri Dinesh Anavadia. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं गुजरात से आता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 2023 की स्थिति में गुजरात के उच्च न्यायालयों में विलंबित मामलों का ब्यौरा दीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, पिछले 3 साल गुजरात में जो प्रश्न पूछा गया है कि उनके यहाँ कितने मामले लंबित हैं, इस मामले में मैं गुजरात के बारे में बताना चाहूँगा कि जो अधीनस्थ न्यायालयों में 14,47,459 मुकदमे जो है लंबित हैं, और जहाँ तक गुजरात में
हाईकोर्ट आपका जिले के मामले में या हाईकोर्ट को मामले? जी जी। Dr. Amy Yagnik. Thank you, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Law Minister that there are about 63 lakh cases in India which are pending due to non-availability of legal counsel to them. Does the government intend to expand the panel of lawyers appointed by the National Legal Services Authority to provide free legal aid to a wider range of these eligible litigants who do not have representation by a lawyer? Honorable Minister. सभापति महोदय, विधिक सलाह के लिए नालसा, सालसा, डालसा और ताल्लुक स्तर पर हम जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए हम लोग विधिक सलाह दे रहे हैं। प्रोबोनो स्कीम है और न्याय बंधु की स्कीम है और टेलीलॉ। I think Also, I will appoint more lawyers for these kind of people. It was not audible, but response I is there. think the answer was not correct. And you both being from this, you can get in touch with the Honorable Minister. So the intention is to come from the Yes, sir. Honorable Law Minister. And the paralegal volunteers are being expanded, and we have already stated that from last year, we are even giving free legal aids for providing pro bono services. The fees are provided with the government. This is a great effort to ensure that poor people get justice at a very, very cheap rate or free, of course, if possible. It required a high decibel response. Dr. Shantanu Sen. Thank you, sir. Sir, as a law-abiding citizen, I am really worried, as because there is a prevailing public perception because of certain events and certain statements that our government is trying to have a direct control over the judiciary. My question before my learned minister is, what step is being taken by our government to clear this confusion amongst the common people at large? Honorable Minister. सभापति महोदय, जैसे आपने ही अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अधिकार हैं, तीनों के कर्तव्य हैं और कोई भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करता है। तो इसलिए सबके अपने सीमाओं में हम लोग काम करते हैं और कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। Question number 81, Shri Javed Ali Khan. Honorable Minister. वह पटल पे रखा गया। Supplementary one, Honorable Member. माननीय सभापति जी, आप भी देखिए मेरे प्रश्न का भाग का। आप प्रश्न पूछिए। पूछूंगा तो जब जवाब देंगे। भाग का एक भी जवाब, एक शब्द भी उसके जवाब में नहीं लिखा गया है। एक, अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। ऑनरेबल, बहरहाल वो बाद में मुझे बता देंगे या दोबारा पटल पे रख देंगे। नहीं, ऑनरेबल मिनिस्टर, तब पटल पर रखा था, अब बताएंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, हमारे जो माननीय सदस्य हैं, उनका स्पेसिफिक प्रश्न था कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सरकार तय करती है, उसमें जो वेटेज के मानक है वो क्या है? ऑल इंडिया और मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि इसके जो मानक हैं 1941 से प्रक्रिया शुरू हुई है। श्रम मंत्रालय के द्वारा 2016 के इंडेक्स को बनाया गया है। हमने 2016 के इंडेक्स के 16 का जो इंडेक्स बनाया, उसमें मानकों में वृद्धि करी है। उसमें जो यूनियन और स्टेट जो संख्या थी, उसको 25 से बढ़ा करके 28 किया है। कवरेज जो 78 था जो सेंटर्स का, उसको बढ़ाकर 88 किया है। इसके अतिरिक्त उसके कवरेज के जो मार्केट्स जो क्षेत्र थे, उनको हमने इंक्रीज किया है और उसके साथ ही साथ सैंपल साइज को भी बढ़ाया है। ये जो मानक इकट्ठे किए जाते हैं,
ये मानक औद्योगिक जगत के जो 7 क्षेत्र हैं उन विभिन्न क्षेत्रों से किए जाते हैं और अब उसमें पहले 392 उसमें कमोडिटीज थी, उनको बढ़ाकर अब 465 किया गया है और उसके द्वारा ही इस वेज का निर्धारण होता है। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, अगर आप मेरे प्रश्न से और उत्तर से संतुष्ट हैं तो फिर मजबूरी में मुझे भी संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका आदेश तो प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। सर माथे है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय के अनुसार मई 2022 में जो थोक मूल्य सूचांक WPI महंगाई का था वो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक था, लेकिन जो हमारा लेबर ब्यूरो है शिमला, उसके अनुसार महंगाई भत्ता 3 से 4% तक ही बढ़ रहा है। क्या मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि आइटम्स का वेटेज परसेंटेज तय करने में कुछ उसे घटाया बढ़ाया जाता है हर बार, ताकि महंगाई भत्ता जो है वो कम देना पड़े? माननीय मंत्री जी, मुझे लगता है कि सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ कार्य करती है और हमने उस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मानकों के स्थान, सैंपल का साइज और सारी संख्याओं को बढ़ाया, जो मैंने अपने पूर्व उत्तर में दिया गया है। और ये मानक 1941 से लगातार किए जा रहे हैं और इसलिए उस पारदर्शी प्रक्रिया को हम पूरी तरीके से सबके सामने रखते हैं। और माननीय सदस्य को भी अगर कोई और आशंका है तो कभी भी व्यक्तिगत आकर मुझसे पूछ सकते हैं। श्री M. Shanmugam। Thank you very much, sir. Regarding the All India Consumer Price Index, it was started in 1936. Subsequently, 1960, it was revised by a committee. Then 1980 also, it was revised by a committee by Dr. Seal and Ra. Long 40 years, no committee has been formed to revise this index. Please, I request the Honorable Minister to revise this index. This is the right time. Honorable Minister. Form a committee and revise. माननीय सभापति महोदय, ये सुझाव है और लेबर ब्यूरो के द्वारा इस पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 श्री K.R. सुरेश रेड्डी। एब्सेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 83 डॉक्टर फौजिया खान। Question number 83, sir. उत्तर सभा पटल पे रखा गया। Honorable member supplementary 1. Sir, I want to ask the minister through you, that these animals from the forest, they come into non-forest areas, and the farmers, to protect their crops, they put up these fences illegally electrified. And because of that, so many tigers and leopards and even humans are being killed. So, because the farmers have to protect their fields, sir, my suggestion to the government would be, can they come up with a scheme where DC current fences are given to farmers, the way you give solar panels and all that? So with this, the farmers' farm will also be protected, and animals and humans will also be not Honorable killed. Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे जो ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, उनकी संख्या भी मैंने दी है। जहां तक आपने सुझाव दिया है, निश्चित रूप से हमारे विभाग के द्वारा 6 फरवरी 2021 को एक व्यापक गाइडलाइन सभी स्टेट को दी गई है। हमने सभी राज्यों से कहा है कि जिला स्तर पर चूंकि विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। पर्टिकुलर जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इंसिडेंट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ हमने वन विभाग के साथ ये भी स्थानीय प्रशासन को कहा है कि हम जॉइंट पेट्रोलिंग भी आपके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं, ताकि जो घटनाएं घटती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है पॉइंटेड रिस्पांस
हाँ, हम जो सबसे ज्यादा जानते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरत है और कुछ जगहों पर विशेष रूप से जो एलिफेंट्स वगैरह हैं वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसकी भी व्यवस्था हमने की है। 6 फरवरी 2021 की गाइडलाइन में कंप्लीट विस्तार से सब विषयों को Honorable Member, second supplementary. Sir, my question was about having a scheme for Ma'am, DC-current avail the fences. second supplementary. My second supplementary, sir, is that in all states, particularly in Maharashtra, this pyramid which is there of the forest department, where administrative positions have to be at the top and executive positions down below, it is being reversed. Executive positions, the people who go to farms to actually, to the forest to actually safeguard it, is becoming less and less, and administrative positions are being expanded unnecessarily by giving additional charges. Honorable Minister. So, sir, I just want to ask the minister whether if people don't go to the headquarters, they don't stay at headquarters, what will the government do about it? Because Honorable this is Minister. the reason why all this is happening. अगर कोई ऐसी विशेष कुछ अधिकारियों के संबंध में आपके संबंध में अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से आप दीजिए ताकि हम कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्कीम की बात है, मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा था कि 6 फरवरी 2021 को एक पूरी व्यापक स्कीम हमने एडवाइजरी जारी करी है, उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी तुरंत ही 1 महीने पहले हमने वापस से एडवाइजरी मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के लिए करी है, जिसमें कंपनसेशन से लेकर सभी विषयों को रखा गया है, जो नेट पे भी उपलब्ध है और मैं स्वयं आपको उपलब्ध करा। Thank you. Question number 84, Shri Narayan Das Gupta, not present. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Question number 85, Shri Sanjay Raut, not present. Honorable Minister. सभा के पटल पर रख दिया गया। Shri Krishna Naya Raiga. Mr. Chairman, और लोक अदालत फ्री लीगल एड के बारे में एक क्वेश्चन है। फ्री लीगल एड some in High Court and Supreme Court, in some area in Lok Adalat are there. But in Supreme Court, so many public litigation interested cases are there. Some of the Your question. Ask your question. Intellectuals, poor persons who filed public litigation interest. In such cases, there is no legal aid. We ask the government to, is there any proposal to legal aid to the public litigation? Honorable Minister. सभापति महोदय, जहाँ तक शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, SC, ST, माइनॉरिटी के लोग जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, उनके लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसके लीगल एड। इस मामले में हम लोग टेली लॉ स्कीम है महोदय, उसी के साथ न्याय बंधु की स्कीम है, उसी के साथ प्रो बोनो स्कीम है। इनके द्वारा जो लोग, और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इस मामले में लोग कानूनी सहायता ले सकते हैं। और नालसा कंट्री लेवल पर, सालसा राज्य लेवल पर, नालसा जिले लेवल पर और ताल्लुक स्तर पर भी इस प्रकार की कानूनी मोक्ष सहायता सरकार दे रही है। Question number 86, Shri Mastan Rao Bida. Not present. Honorable Minister. Honorable members, on the motion of thanks on Honorable President's address, opportunity was given to all sections of the House. However, in the category of nominated members, as Shri Ghulam Ali availed the maiden speech time, I will accommodate one more member at their request. 10 minutes will be given to a member in this category at 2 p.m. and thereafter there will be reply by the Honorable Prime Minister. Nominated. Question hour is over. Honorable members, House stands adjourned to meet at 2 p.m.
today. डेट दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय करीब दुगनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में बन गई। देश करीब 2 साल तक कोरोना से लड़ा। देश करीब 2 साल कोरोना से लड़ा था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के आम आदमी के हित में को ध्यान देते हुए जनहित के फैसले लिए और इनका लाभ देश के सभी जनता को हुआ है। आज देश दिन तक 102 करोड़ लोगों को लक्षित किए हुए कोविड विरोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार हुआ है। इसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के जुड़े लोगों को बधाई देना चाहिए। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए नगद हस्तांतरण किया है। देश का किसान सभी और खुशहाल हुए। माननीय मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के तहत करीबन 70,000 करोड़ सभी राज्यों को दिया है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाके में पानी की योजना होते हुए कई सारे ग्रामीण इलाकों को इसका लाभ पहुंचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में पीएम गति शक्ति को बढ़ाने देने वाली 7 कारक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक, ये इस पर ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष जी, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्माण, बहुपक्षीय कन्वेंटिंग और लॉजिस्टिक के दायरे में आए। राष्ट्रीय अवचरण पाइप लाइन में 7 कारकों के जुड़े
इस परियोजना का लाभ सब देशवासियों को हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेटवर्क में 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्किंग में विस्तार करीबन करने के लिए 20,000 रुपए जुटाए जाएंगे। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। अध्यक्ष जी, एक समय इस देश में आधारभूत सुविधा में कमी होती थी, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का कमी होती है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार में ये यशस्वी कदम उठा। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस निर्माण में गति दी और माननीय नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में आज देश में सीमाओं तक वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हुआ है। एक समय था कि देश में सीमाओं पर सड़क का निर्माण नहीं था। आज यह सरकार द्वारा यह मानांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई में करीब 50% वृद्धि हुई है। अप्रैल 2014 में राजमार्ग की लंबाई 91.287 किलोमीटर बढ़कर 2021-22 में 1,40,995 किलोमीटर हो गई है। कुल बजटीय करीबन 5.5 गुना वृद्धि हुई है। आज भारतीय राजमार्गों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ये सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ये माननीय नितिन जी गडकरी ने करके दिखाया। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा देश में आज मेट्रो रेल का जाल बिछा रहा है। यह बजट में पिछले बजट की तुलना में अधिक राशि का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक साथ जब रेल कोच का आयात करते थे, लेकिन आज हम वर्ल्ड क्लास कोचिंग का निर्माण देश में करते। अध्यक्ष जी, मोदी के नेतृत्व में देश अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण देश में करेगी। साथ ही अगले 3 साल के दौरान नई मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावला तक लोकल सेवा चालू करने के बारे में लगातार यह बात रखता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा इसमें जल्दी से जल्दी अगर सहायता देगी तो निश्चित रूप से ये मार्ग भी बनेगा। दूसरा, कर्जत से पनवेल और पनवेल से उरण तक का मार्ग धीमे गति से चल रहा है, तो ये मार्ग पर रेल विभाग द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान कुछ जरूरी मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूँ। देश में रिटायर कर्मचारी की संख्या करोड़ों में, सरकार की और उन को दी गई राहत प्रदान नहीं की जाती है। सरकार पेंशन राशि पर इनकम टैक्स वसूल करती है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 2023 के बजट में घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की बचत लिमिट को 1 लाख से 5 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख किया है, जिसका मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। परंतु इस बचत पर कमाए ब्याज पर जो टैक्स देना होता है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। पिछले बजट में 75 साल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक को ITR दाखिल करने पर एग्जेंस किया है, पर उनकी ब्याज में कई कमाई पर TDS कट नहीं लेगी। जब ITR भरने पर
TDS कैसे वापसी मिलेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, 70 साल के आयु के बाद वरिष्ठ नागरिक मेडिकल बीमा के लिए पात्र नहीं है। इसमें सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट 9 साल का कार्यकाल का माननीय मोदी जी के बजट का एक सर्वोत्तम बजट है। इसमें सभी लोगों पर ध्यान दिया है, जैसे कि गरीब हो, किसान हो, कर्मचारी हो, इस पर सरकार ने ध्यान दिया है। एक अच्छा और सराहना बजट पेश किया है। माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छा बजट यहाँ पेश हुआ, उसका स्वागत भी करता हूँ। श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, केंद्रीय बजट 2023-24 जो सदन में चर्चा के लिए, सामान्य चर्चा के लिए लाया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, जब भी सदन में बजट पर चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष के लोग जो हैं बजट की सराहना करते हैं। हमेशा आजादी के 75 साल हो रहे हैं, इन 75 सालों में जो भी सरकार बजट बनाई, सभी सरकारें दलित, पिछड़े, अकलियत, किसान, मजदूर के हित में कह करके लोगों ने बजट बनाए। लेकिन सरकारें बदलती रही, बजट बनते रहे और बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तस्वीर आज तक नहीं बदली, आज तक नहीं बदली। आज भी करोड़ों लोग, आज भी करोड़ों लोग गंदे नाले और पेड़ों के नीचे जन्म लेते हैं और वहीं पर मर जाते हैं, वहीं पर आज भी मर जाते हैं। इसलिए महोदय, हमें इसके तरफ नहीं जाना है, लेकिन हमें सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि बड़ी अरमानों से बिहार की 13 करोड़ जनता ने आपको 2019 में 40 सीट में से 39 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम किया, लेकिन 40 सीट में से 39 सीटें 40 बहुत आशा, उम्मीद और अरमान के साथ इस बजट पर निगाहें रखी थी बिहार की जनता। उसको विश्वास था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस बजट में जरूर प्रदान किया जाए, क्योंकि यह मांग जब बिहार में गठबंधन हम लोगों के एनडीए की सरकार थी, बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार थी, उस समय विधान परिषद से लेके विधानसभा तक सब लोगों ने पारित करके भेजा था केंद्र को कि हमको बिहार की विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो केंद्र सरकार ने उस समय वादा किया था कि बिहार को हम लोग विशेष पैकेज दे करके विकसित राज्यों को श्रेणी में लाने का काम करें। न तो बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिए, न बिहार को कोई पैकेज दिए। झूठ नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपने बिहार को कौन सा पैकेज इस बजट में दिया है? कहाँ है? जरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कहाँ आपने विशेष पैकेज दिया है। न बिहार को विशेष पैकेज ही हुजूर दिए। सर यहाँ तक कि देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में
हम बता देना चाहते हैं कि यहां से जो भी घोषणाएं होती है जमीन पर उतरना चाहिए, जमीन पर उतरना चाहिए। 2000 बिहार के अंदर 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री ने बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था। उस समय 3,500 की, आज 3,500 करोड़ की वो योजना हो गई, लेकिन शिलान्यास होने के बाद आज 14 साल बीत गए, आज तक वह बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम जमीन पर नहीं उतरा। अब बताइए महोदय कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी मान्य सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे राम कृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास के डालमिया नगर, टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे वैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज, 14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वही से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को, जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन आज तक वो 7 में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन और झूठ के सहारा लेते हैं, झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है, और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है, और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं, आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं? आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं? आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप पूछ लो, अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है, आज 75 वर्षों में आजादी के, आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? इसके लिए सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो,
चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय, अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका प्लीज बैठ जाइए अगर प्रयास आपका जब अवसर है तब बोलिएगा। तो एक ही उपाय है महोदय कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है यह गैर बराबरी व्यवस्था है और यह व्यवस्था जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा, इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा और उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा, सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अगर आप भागीदारी देना चाहते हैं तो उसके लिए एक काम और करना होगा। अब समाप्त कीजिए जी। अरे महोदय, हमारा 20 मिनट का टाइम है और भी वक्ता है आपके दल के, 20 मिनट प्लीज का समय है महोदय, आपके 20 दल के मिनट और का भी समय मान्य सदस्य हैं, इसलिए महोदय आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए, देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? और जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा सभापति महोदय कि कौन जाति की इस देश में कितनी संख्या है। और जब तक संख्या उनकी गिनती नहीं होगी तो उनको हिस्सेदारी और भागीदारी ये सरकार कैसे दे सकती है? तो इसलिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है, ताकि जब बात उठती है हक की, हिस्सेदारी की, इस देश में आरक्षण की बात उठती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार ने जातीय जनगणना नहीं कराई है कि कौन सी जाति की कितना आबादी है तो हम उनको आरक्षण कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। जब इस देश के अंदर जब अगर
विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, तो जातीय जनगणना कराइए और जो जितनी जातियां जिनकी आबादी है उस हिसाब से उनको भागीदारी दीजिए, आदरणीय श्री तब भरतरी जाकर मेहता के जी। विकसित राष्ट्र बन सकता है महोदय। इसलिए महोदय हम इस समान चर्चा पर एक बार सदन के माध्यम से सरकार से Thank you, Mr. Chairman, sir. जी जी, बैठिए बैठिए, हो गया आपका विषय, हो गया। प्लीज जी मेहताब साहब। Thank you, Mr. Chairman, sir. The budget. कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। Report. जी आदरणीय मेहताब It is basically reflects the plan and program of the country and of the nation. So when something is said that it is only an accountant's job, I don't believe in that type of comment. There have been umpteen reasons to be apprehensive in 2023, more so while waiting for the budget. US Federal Reserve's unbridled aggression, rising cost of funds, intensifying in Russia, and China's COVID crisis, to name a few. Yet in the backdrop of like this government has decided to go bold and big on capex and chosen consistency in a world characterized by randomness and volatility. The Prime Minister has outlined the period from 2022 to 2047 as the period of Amrit Kal. It is a vision to make India a developed country during this golden phase. To realize this, India needs to rapidly invest in social infrastructure. This investment would need to come from taxpayers' money and not borrowings. India's tax to GDP ratio is still below the critical mark of 15%. India's gross tax to GDP, which was 11% in financial year 2019, fell to 9.9% in financial year 20 and marginally improved to 10.2% in financial year 21-22. This is much lower when we compare ourselves with the emerging market economy, which is average of 21, and OECD, the average is 34%. Today, the country boasts more than 4.3 million crorepati's households, equivalent to 23 million consumers. They are spread all over the country. By 2047, if political and economic reforms have their desired effect, India has the potential to become the fastest growing economy in the world. This growth will not only make the Indian middle class the biggest income group in the country, but it will set to be major driver of economic, political, and social growth. Finance Minister's full-fledged budget before next year's general election can be commended on many counts. I mention only three. For staying the course on fiscal consolidation, changing the composition of government expenditure in favor of capital as against revenue spending, and third, welcome move relating to personal income taxation. In turbulent time like this, a good budget can only be said is just a good beginning. The turmoil in the global economy is likely to continue as the impact of higher interest rates shows up in weaker demand for consumption and investment. Geopolitical tensions continue to disrupt every supplies and trade.
as the resilience of the domestic economy gets tested by global headwinds, deft fiscal maneuvers is necessary, like they were this year. Now, coming to the basics, sir, there is need for some answers. PM Kisan allocation is 13.33% lower as compared to budgetary estimate of rupees 68,000 crores made in 22-23. The revised estimate of 22-23 was reduced to 60,000 crores, no doubt, but in 21-22, an actual expenditure was rupees 68,825 crore, which was incurred on the PM Kisan. The figure is there for all of us to see. Should we believe that people have moved from farming to some other avenues for better? Or should we believe that they have been pauperized and have become daily wage earners? On MGNREGA, this generated an all-time high, 389 crore person days of employment in 21-22. 363 crores in 21-22. Even this fiscal project is 290 to 300 person days will exceed the 265 crore plus generated in 29-20 and 2018 and 19. It is a demand-driven scheme. Whenever we make this point, always it is said it's a demand-driven. But here the figure shows how it has met. The budgeted amount this year is 60,000 crores. The question is, how realistic is the assessment? If the next southwest monsoon is normal and the non-farm economy timely recovers, MGNREGA may not require any additional funding. Till then, do we have to keep our fingers crossed? Coming to free food distribution scheme, and this is a scheme which we have all experienced, moderated income inequality in many states. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana played a key role in keeping extreme poverty in the country at the lowest level. We didn't hear a single death because of hunger, because of this program. IMF report says extreme poverty was at the lowest level of 0.8% during the pandemic hit 2020. SBI study, State Bank of India study, has analyzed that several government transfer payments for the poor are adding rupees 75,000 to a household per annum. But I would like to draw the attention of the government to the design flaw, as ration records have not been updated since 2011 onwards. More than 40% of India's population is currently excluded from National Food Security Act. 40%. In many villages and slums, the most marginalized castes and communities are often without NFSA ration cards. However, states like Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, West Bengal, and Chhattisgarh have either universalized or substantially expanded coverage with state cards. Sir, here I would like to remind the government about the Supreme Court judgment of last August, that is 2022, which has directed the Union government to expand National Food Security Act coverage. Nothing has happened till now. Nothing has happened. And the answer that comes from the government is, let the census be over. Despite Supreme Court's direction, based on population projection, at least 100 million beneficiaries, especially children
born in the last decade are missing from the ration list. Where are they going to be? When are they going to be covered under NFSA? I come to the another very important issue where Odisha has been affected to a very great extent. I'll first put the figure of the budget, where food subsidy in Food Corporation of India under National Food Security Act, the revised estimate of 22-23 was 2,14,596 crores. This budget is 1,37,207 crores. There is a drastic cut. On food subsidy for decentralized procurement of food grains, 72,283 crores, which has come down to 59,793 crores. The government may say, because we have withdrawn Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, there is no need to procure more. And here actually the catch lies. The catch is Odisha produces more than 72 million tons of paddy. And we purchase, FCI plus state government purchases the whole amount from the farmers because to help the farmers at the MSP rate. Very few people keep rice for their own consumption. Other than that, the rest is purchased. What will happen here? Now already Odisha government is purchasing, but union government is not purchasing any paddy at all. No rice. Earlier, rice was being moved through Kerala to Tamil Nadu and also to the northeast. Now that is also not being done. Why this type motherly attitude to Odisha? That is the question which I would like to put. With this curtailment of or minimizing the purchase, who are the states which are getting affected? Odisha is the major state which is getting affected. And I would like to say, FCI is not taking parboiled rice. Corporation is not making payments to Odisha, though that is due in there. Sir, this budget is of 45,397 crores, and which is an increase of 7.5%. That is laudable, as I had said earlier. But what is the position? The position is, as I would say, there is a structural problem with our budget. More than 40% goes for the interest, to cover the interest. 30% goes on salary. So are we correcting it to a certain extent? No, not much. We don't see any light from this budget. And I'm also reminded of another point, sir. You are aware, most of us are also aware. Are we at any point of time talking about Sahara India? 13 crore people had invested in that. What has happened? Doesn't government have any responsibility? We will say it is sub judice, Supreme Court is taking over, SBI is looking after it. But who is caring for these people, 13 crore people who had invested? No, not a single reply is coming from the government. Sir, coming to health issue, I would just deal with investors are 13, large number of people are affected. Sir, in a speech, Finance Minister has announced budget for health, not including research, will be roughly 86,175 crores, and that is 615 rupees for every person if I calculate it as per our population. This is a 2.7% increase from the previous year and lower than the rate of inflation. In real terms, the health spending has declined. Vaccinating to a single child against all childhood illness in our country costs
rupees 1,600. A day of hospitalization in the public hospital is estimated 2,800 rupees. At a private hospital, it is more than 6,800 rupees. Rupee spending on health by the government gives more return than out-of-pocket or private spending by citizens. National Health Mission allocates less than 3%, that is 717 crores of rupees to non-communicable disease. For communicable disease, it is 3 times more, that is 2,178 crores. For reproductive and child health service, it is 9 times more, that is 6,273 crores. There is a need to rebalance, to pay attention to non-communicable diseases. On education, sir, share of education has fallen over the past 7 years, from 10.4% to 9.5%. This is stated in the state's in the economic survey. While expenditure on social service increased from 9,15,000 crores to 21,32,000 crores, the share of education has shrunk from 42.8% to 35.5% between 2015 and 2022. As a share of the GDP, the budgetary allocation for education saw a minimal gain, that is 0.1 percentage points, from 2.8% to 2.9% during this 7-year period. On taxation, sir, Finance Minister has made 5 announcements to reduce the tax burden. 4 pertain to the new regime. The last one is for exemption on leave encashment. But my question is the new tax regime attractive? Despite government's effort to simplify the tax system, the uptake of this regime is low due to the unavailability of common tax deductions and exemptions. Why should we have to run to the chartered accountant or a lawyer to understand how much tax I have to pay? Can't we make it simple? Even today, with this new tax regime, it is so cumbersome, it is difficult to understand. Very difficult to understand. Coming to the devolution of states, sir, the state share has never been close to 41%, though it has been announced by the Finance Commission, 15th Finance Commission. The state share has never been close to 41% due to cess and surcharge imposed by the Union government. Odisha government, our Chief Minister has been Naveen Patnaik has been repeatedly writing to the Prime Minister that you share some of this, but that is falling on deaf ears. It keeps major chunk of taxes. And what we have been asking, Odisha is facing natural disaster year after. Our only demand is that you allow, and this we have discussed, the state government also has discussed with the Niti Aayog, with the Prime Minister, that you make Odisha a special focus state. Time is exhausting. For at least 3 years. If a natural disaster hits Odisha, allow or declare it as a special focus state where 90:10, that is the center and state share, for 3 years only, so that we tide over the situation and come up forward. Sir, on railways, I will be failing on my duty if I don't mention 2-3 words, because the rail minister is a member of this house representing our state. We find a significant feature. It has set aside nearly a quarter of its total capex outlay of rupees 10 lakh crores. The budgetary support amounts to 2.4 lakh crores. The goal is to raise the share of rail freight traffic from 27%, road transport is 64%, to 45% by 2030. Freight earnings are 2.5 times the passenger earnings. It is possible to improve on both counts. It's not unachievable. It is possible. The railways must adapt to become a transporter of FMCG, automobiles, and other high-value products for which last mile connect is important. On the passenger side,
Upper class travel should remain competitive vis-à-vis air and road travel. There is scope to raise both traffic and freight revenues. Despite pensions, can we imagine? Pensions of railway is over 25% of the total operating expenses of the railways. The budget numbers indicate 30,000 crores of rupees has been set aside for doubling of tracks. This was only 9,000 crores in 21-22. 32,000 crores to be spent on new tracks, that is 50% increase in 2 years. 40,000 crores on the rolling stock, which was only 8,000 crore last year. 8,000 crores for electrification. These are big numbers, very big numbers. The obvious question is, from my state point of view, how much is actually percolating to the state of Odisha, which has been denied railway development for last so many years. The obvious question, of course, is whether railway have the capacity for absorption and implementation for this expanded capital. Capital investment in the railway is overdue, no doubt, but it needs financial reforms, administrative reforms, and greater independence. Before concluding, sir, I have a small demand, as my friend from Kendrapada has just mentioned. The station is there, tickets are being sold, rail line is there, but it is not functioning. Passenger train should ply on that route. That is necessary. With these words, I conclude. Thank you. श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे बजट 23-24 पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका और आपके साथ साथ अपनी पार्टी की मुखिया व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बजट 23-24 के लिए हमारी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि देश में पहले भी इस तरह के बजट आते जाते रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु वे सब बेईमानी हो गए। जब भारत का मध्यम वर्ग महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और कोविड के चलते लोअर मिडिल क्लास बन गया। यह बजट भी पिछले वित्तीय वर्षों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। सरकारें अपने पिछले साल की कमियों को नहीं बताती हैं, उन कमियों के स्थान पर नए वादों की झड़ी लगा देती हैं। सच्चाई यह है कि 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन हमेशा ही दांव पर लगा रहता है, जैसे कि इसके पूर्व के बजट के अभिभाषणों में था। यह बजट भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बजट की तरह ही है। महोदय, बजट में हर वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है। जहां 5 लाख का इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, इसमें हर मध्यम परिवार को बहुत मदद मिलेगी। वहीं नई टैक्स रेजिम और पुरानी टैक्स रेजिम में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है कि किस टैक्स रेजिम में जनता को अधिक से अधिक फायदा होगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस अपने अभिभाषण में इस टैक्स रेजिम को अवश्य स्पष्ट करें। मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना के बजट में 13,000 करोड़ की कटौती की गई है। हम सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण अंचलों में मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूर अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं और इस योजना से संचालन से ग्रामीण में पलायन भी रुका है, साथ ही साथ रोजगार के सृजन भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधान संघ के सभी लोग आंदोलित हैं कि उनका समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है और जो भी कर्मचारी ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनका वेतन भी वो अपने जेब से दे रहे हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए 3,943 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह एक सराहनीय कदम है, लेकिन अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावासों की जरूरत है। खास तौर पे मेरे जनपद आजमगढ़ में, जहां कई एकड़ की सरकारी जमीन अब भी खाली पड़ी है, मेरी सरकार से मांग है कि आजमगढ़ जनपद एक मंडल है जहां अभी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय संचालन में आया है, जिसके चलते कई जिलों के छात्र यहाँ पठन पाठन करने आते हैं। इन छात्रों के लिए भी इसी तरह के कोचिंग सेंटर और छात्रावास बनाए जाएं। महोदय, बजट में आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम की सफलता को सरकार स्वास्थ्य, पोषण,
शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन तथा अन्य हेतु 500 ब्लॉकों का चयन करने के कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। मैं चाहती हूं कि हमारे जनपद आजमगढ़ के समस्त ब्लॉकों को इस योजना में शामिल किया जाए। महोदय, आजमगढ़ में महाविकास की योजना की रूपरेखा अभी तक तैयार नहीं है, जिसके कारण से भूमि आवंटन नहीं हो पाया है। कौन सा ग्रीन लैंड है, कौन सी औद्योगिक भूमि है, कहाँ पार्क है, कहाँ क्रीड़ा स्थल है, कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ वनीकरण है, कहाँ सीवेज का प्लान है, इसका कोई मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं है। एडीए ने वर्ष 2031 के लिए महायोजना का मास्टर प्लान बनाकर 2021 में शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। अमीर गरीब अपने आशियाने का सपना संजोए उस प्लान को लागू करने का इंतजार कर रहे हैं। औद्योगिक भूमि अलग नहीं होने के कारण कारपोरेट समूह और बड़े ब्रांड की कंपनियां जनपद में अपना रुख नहीं कर रही हैं, इसलिए यहाँ विकास और रोजगार पूरी तरह से ठप है। आजमगढ़ चारों तरफ से तमसा और घाघरा नदियों से घिरा हुआ है। हर साल बाढ़ से सैकड़ों गांवों में जान माल का नुकसान होता रहता है। मेरी सरकार से मांग है कि रिवर फ्रंट बनाकर नदियों पर बाढ़ का नियंत्रण कर सके। और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा नदी पर कमर्शियल क्रूज का उद्घाटन किया है। मैं चाहती हूँ कि उसे मेरे जिले की नदियों से भी जोड़ा जाए, ताकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना जो नदियों को नदियों से जोड़ने का था, उसे पूरा किया जा सके। आजमगढ़ को चारों तरफ से रिंग रोड के मास्टर प्लान बनाकर जोड़ा जाए और उसे मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, फूलपुर, निजामबाद और बूढ़नपुर के तहसीलों से भी जोड़ा जाए। सर, हाईवे की बात करूं तो NH-233 पिछले 6 सालों से बनने को है, लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ है। PMJSY की सड़कों की बात करूं तो सत्र खत्म होने को है, लेकिन सिर्फ 50% काम ही इस पर हो पाया है। सर, इन सरकारी योजनाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए। हर घर नल योजना जो सरकार ने अभी बात कही है, सिर्फ 30% अभी तक सर्वे हुआ है, बनने तो दूर की बात है। आजमगढ़ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, घरेलू औद्योगिक गलियारे की स्थापना की जाए। इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी में आजमगढ़ को भी शामिल किया जाए, ताकि आजमगढ़ में भी नए उद्योगों की स्थापना हो सके और जो जिले से पलायन होकर बड़े शहरों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे रोका जा सके। आजमगढ़ का मंदूरी एयरपोर्ट पूरी तरह से बन के तैयार है, उसे जल्द से जल्द संचालन में लाया जाए और एयरपोर्ट से तहबरपुर बाजार होते हुए निजामाबाद, फरिया बाजारों से मोहम्मदपुर, वाराणसी 4 लेन तक जोड़ा जाए। आजमगढ़ के इटौरा में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय और चक्रपानपुर में मेडिकल कॉलेज होते हुए मेहनाजपुर वाया सिधौना तक पूरी सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाए, जिससे वाराणसी आजमगढ़ के लिए एक अन्य सीधा मार्ग बन जाए और ट्रैफिक बढ़ जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने वालों की राह आसान हो जाएगी। वाराणसी, लालगंज, आजमगढ़, गोरखपुर की नई रेल लाइन का बजट 2022-23 में स्वीकृत किया गया है, लेकिन इसका काम काफी धीमी गति से चल रहा है। इसमें तेजी लाई जाए और लालगंज में एक स्टेशन बनाया जाए, जिससे वहां के लोकल प्रोडक्ट, अनाज, फल, सब्जियों को आयात निर्यात में आसानी हो सके और एक वंदे भारत ट्रेन को मेरे जिले में भी चलाई जाए। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, काले मिट्टी का बर्तन का उद्योग और रेशम उद्योग, जिसमें मुबारकपुरी साड़ियां भी शामिल है, ऐसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इनके बिजली के बिल को माफ किया जाए, इनको आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाए और इनको GST से मुक्त किया जाए और छोटे व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाए। आजमगढ़ में लाल सोना कहे जाने वाली लाल मिर्च की खेती होती है, लेकिन इसके भंडारण और निर्यात का प्रबंध नहीं होने के कारण किसानों को इसका मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाए। सनई की खेती पहले हमारे यहाँ होती थी, लेकिन अब यह मृतप्राय हो चुकी है। अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तो जूट उद्योग यहाँ स्थापित हो सकता है और यह मृतप्राय खेती भी पुनः जीवित हो सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में श्री अन्न की बात कही है। आजमगढ़ की भूमि इस तरह के श्री अन्न, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, जौ जैसे अनाज शामिल हैं, इसके लिए प्रतिकूल है। मेरी सरकार से मांग है कि ऑर्गेनिक खाद, सरकारी समितियों में ऑर्गेनिक खाद और श्री अन्न के बीज उपलब्ध कराया जाए, जिससे आजमगढ़ में भी इस तरह के श्री अन्न की भारी मात्रा में खेती हो सके। आजमगढ़ में मत्स्य संपदा योजना के तहत, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि नदी तालाब का जाल बिछा है, इसको भी प्रोत्साहन करने के लिए वहां के उद्यमियों को इसका प्रोत्साहन किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आजमगढ़ चारों तरफ से नदियों से घिरा है, गाँव को जोड़ने के लिए नदियों पर पुल बनाकर एक्सप्रेसवे और 4 लेन से जोड़ा जाए। सब 2 मिनट। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र
क्षेत्र से मात्र 40 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। आजमगढ़ बीच में होने के कारण पूर्वांचल का दिल कह सकते हैं। यह दोनों क्षेत्र से बड़ा जिला है जिसका विकास पूरी तरीके से अधूरा है। अमृतकाल का यह समय और यह बजट लोगों के उत्सव मनाने वाला है, लेकिन अगर आजमगढ़ को इस में स्पेशल पैकेज दे दिया जाएगा तो आजमगढ़ के लोग भी इस अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। और अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति अभिभाषण में पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है पर तेरी रहबरी का सवाल है। सर, देश के साथ साथ आजमगढ़ की जनता भी बहुत उम्मीद से माननीय वित्त मंत्री की तरफ और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद लगा के बैठी है कि अमृतकाल के बजट में आजमगढ़ को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा जिससे हम सभी लोग अमृतकाल का उत्सव मना पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूं। मैं इतना भाग्यवान हूं कि तीसरी बार इस क्षेत्र में, इस बड़े हाउस में बात करने का मौका मुझे मिला है। मेरी भगिनी जो मेरे साथ झारखंड में गवर्नर थी, अभी राष्ट्रपति बन गई। मेरी पहली एक भगिनी प्रतिभा जी, वो भी मेरे साथ पड़ी हुई है और रामनाथ जी भी गवर्नर थे, इसलिए मैं भाग्यवान समझता हूं। और मेरी भाषा जो आगे मैं मराठी में बोलूंगा तो भी चलेगा, हिंदी में भी बात करूंगा। सतारा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें मैं आता हूं। स्वातंत्र के पूर्व काल में जो 3 जिले सब भारत में प्रसिद्ध थे लड़ने के लिए, उसमें क्रांतिकारी नाना सिंह पाटिल जी थे। और मेरी एक कामना है, मनु तांबे जो झांसी की रानी कहती है, उसका मायका भी मेरे क्षेत्र में है। तो मैं चाहता हूं, मेरी मांग भी है कि मिलिट्री भर्ती के लिए कुछ एक विद्यापीठ बनाए जो मिलिट्री एकेडमी जैसे एनडीए खड़गवासला में है और आईएमए जैसे देहरादून में है, वैसे अगर कोई मिलिट्री एकेडमी बने सेंटर की और महिलाओं के ट्रेनिंग के कुछ जबाबदारी लेंगे तो अच्छा रहेगा। आता मी मराठीत बोलतो। महाबळेश्वर पाचगणीच्या ज्या शाळा आहेत इंग्रजी माध्यमाच्या, त्यांना संपूर्ण भारतातून तिथं आपले पालक आपल्या मुलांना पाठवतात। महाबळेश्वर एक थंड हवेचं उत्तम ठिकाण आहे। हे दोन्ही जंगलाच्या प्रदेश असल्याकारणानं एनजीटी नॅशनल ग्रीन ट्रायबलची बरीचशी बंधनं आहेत आणि त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळामध्ये 150-200 वर्षापूर्वी जे क्षेत्र निर्माण झाले आहे त्या क्षेत्राचा जर विकास झाला नाही तर रोजगार जोपर्यंत मिळत नाहीत, घोडेवाले, खेळणीवाले, काही फळं विकणारे, लोकांना धान्य पुरवणारे, लोकांना रिक्षातून नेणारे, सायकल रिक्षा नेणारे लोकांना पोटामध्ये उद्योग मिळत नाही, तोपर्यंत रोजगार मिळावा, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, हे बजेटची
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.